था। चलो है, ऑनेस्टली मैं सोफा स्कोर पे आ ही रहा था। हाँ, तो मैं अब तक बकबक कर रहा था एंड मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने स्टीम पे माइक ऑफ करके रखा था। तो बाकी अभी देखते हैं जो भी है सीन। क्या अभी सोफा स्कोर मैंने इसमें खोला, राइट? इसमें इंफॉर्मेशन दिखाता है क्या? इसमें भी फॉर्मेशन नहीं दिखाता है अपेरेंटली। मैं एक बार गाइस आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। क्या ही करोगे स्क्रीन देख के। ठीक है, अभी इसमें फॉर्मेशन तो आ ही गई होगी। अभी तक तो मैंने जो बका है वो सब फालतू बका है, तो फिर से बकते हैं, वही चीज है। तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से पहले इसको भाई थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। कैन इट बी डन? यस इट कैन बी डन, यस इट कैन बी डन। इसमें भी वही फॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा होगा। ये तो अपने बस लाइनअप्स है एंड अरे ये कौन सा मैच खुल गया? अच्छा, ये प्री मैच है। अरे यार, ये कौन किसका प्री मैच खुल गया था? स्पेन ऑस्ट्रिया का देखना है मुझे। व्यू फुल पेज। अभी इन्होंने ओयार जबाल और एलेक्स बायना। देखो भाई, ये इधर पे जो फार्म में सामने चारों है, ये कोई ऐसे, मतलब क्या बोलूं भाई, इन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। हालांकि ओयार जबाल हैज बीन फैसिनेटिंग, ओयार जबाल हैज बीन इनक्रेडिबली फैसिनेटिंग। उसका यूरोज वाला कैंपेन एंड स्टफ। तो एक सेकंड यार। आई गेस क्रिएट चैनल करना पड़ता है चार्ट के लिए। आई गेस क्रिएट चार्ट करने के लिए करना पड़ता है। तो अभी देखो, अभी 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 देखो, जो चीज है, पेड्री खेल रहे हैं, रॉड्री खेल रहे हैं, रॉड्री बीइंग द कैप्टन। एंड फिर हमारे पास है पेड्रो पोरो, मार्क कोकोरिया, रीसेंट मड्रिड ब्लड। ओके, प्रीटी डिसेंट टीम। देखो उनाई सिमोन, मैं जो पहले कह रहा था भाई, डेविड राय कितना भी अच्छा खेल ले, उनाई सिमोन यही खेलने वाला है। बिकॉज पता है क्या सीन है। ये जो कोच है ना अपना लुइस डेला फोंटे, ये बहुत पहले से यूथ रैंक्स में भी आ रहा था। एंड काइंड ऑफ तुम उसको बोल सकते हो कि वो ग्रो करते हुए देखा है बंदे को अपने सामने। तो उस पर एक अलग लेवल का भरोसा है बंदे को। तो डेला फोंटे वोंट चेंज एनीथिंग दैट इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर हिम। सो यही बात है। हालांकि यू हैव डेविड रा, जॉन गार्सिया, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब जॉन गार्सिया का सीजन तो बहुत अच्छा गया था। कुछ मैचेस में एक्चुअली बारसा को सेव किया है उसने। एंड डेविड राय बिंग डेविड राय, द वॉल ऑफ आर्सेनल। ऑब्वियसली भाई, फॉर ऑल द राइट रीजंस, द वॉल ऑफ आर्सेनल। हराम बॉल भाई, हराम बॉल ऑन टॉप। एंड हमारे पास है सामने गेगन प्रेसिंग के, आई गेस राल्फ रैगनिक तो ऐसा ही कुछ कहा जाता है ना, राइट? आई डोंट नो बट एनीवेज, जो भी है। एंड आज का रेफरी है ग्लेन नाइबर्ग। ये बंदा निकालता है 3 येलो कार्ड हर मैच में। देखते हैं, कार्ड्स का भी तो सिलसिला देखना है ना, आई गेस। प्लेयर्स पे कार्ड का भी इशू होएगा, क्योंकि अब देखो नॉकआउट का सीन है। अब जितने कार्ड एक्यूमुलेट होंगे ना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा कार्ड्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू प्ले द नेक्स्ट गेम। ऑन दैट नोट, अभी चलो कुछ मीम्स देखते हैं। देखो ये क्या है, हालैंड नॉकड आउट बिफोर रोनाल्डो। हालैंड नॉकआउट गोल बिफोर रोनाल्डो। यार देखो, रोनाल्डो बिंग रोनाल्डो भाई, उसका गोल आए ना आए, ही इज प्लेइंग एट 41। एंड उससे ज्यादा तुम लोग क्या ही चाहते हो यार? उससे ज्यादा क्या ही चाहते हो? आ, हाँ तो, अरे यार मैं चैट मिस कर गया गाइस, सॉरी सॉरी। फॉर्मेशन का मुझे पता नहीं। पेड्री इज यूजलेस, पेड्रो इज यूजलेस प्लेयर है। समवन हैज सीडी ऑफ
फ्यूएंटे। अच्छा, कॉन्फिडेंस ऑफ डेलाफोन्ट। जॉन गार्सियास गुड भाई, बारसा वाले लौटने आ गए तुम। आलाबा गोल गेटिंग। आलाबा गोल हिटिंग, अच्छा बहन। तो तुम कह रहे हो आलाबा को गोल पड़ेगा? पढ़ना भी चाहिए आई गेस, इट्स नॉट दैट बैड। क्योंकि बंदा आधा टाइम तक इंजर्ड रहता है, बेंच पे रहता है, अदर देन दैट मुझे क्या ही बोलना है। तो फिर वही बात है, आ जाती है भाई बातें तुम्हारी फिटनेस के ऊपर, तुम कैसे परफॉर्म करते हो एंड चीजें। एंड अभी के लिए देखो, फॉर्मेशन का क्या ही बोलना है। आई थिंक दिस इज द वेरी फॉर्मेशन अभी जो मैच ये दिख रहा है, बट दिस कांट बी श्योर। सो अभी देखते हैं। देखो लमीन यमाल का जो, आई थिंक पिछले मैच में ये दिस इज एसेंशियली, बोल सकते हो कि लो ब्लॉक में जाने वाली टीम है जो मिडफील्ड में बॉल खिलाने वाली होगी। तो अदर देन दैट मुझे पता नहीं भाई ऑस्ट्रिया कैसे खेलने वाली है। गैगन प्रेसिंग में ये लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं आराम से। एंड थोड़ा तो देखना पड़ेगा मैच कैसे चलता है, बट हाँ आई थिंक, देखो अब की चीजें पे देखते हैं इनसाइड्स में क्या है। स्पेन हैवंट कंसीडर्ड अ गोल एट द वर्ल्ड कप अक्रॉस 3 ग्रुप गेम्स। भाई ये दिखाता है तुम्हारी कि कुबारसी एंड लपोर्ट के पार्टनरशिप कितनी स्ट्रांग है एक्चुअली। तो हाँ ये बात तो है। तो अभी माफ करना, मैंने बस अभी चैट देखा है। मैं इसको ऑन करना भूल गया था। मैं एक्चुअली चार्ट ऑन करना ही भूल गया था। तो फिर, और अब हमारे पास है, और कौन है? स्टैट्स पे डिस्कस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि क्या कुछ होगा। स्पेन हैव kept 10 clean sheets in their last 13 मैचेस। ओ, 13 मैचेस, 13 मैचेस में। एंड उनके लास्ट 13 मैचेस किन के अगेंस्ट है? इफ आई सी, इराक, पेरू, पेरुवाइन प्लेइंग वर्ल्ड कप, केप वर्दे। भाई दिस वाज वन मैच जिधर पे इनको गोल स्कोर करना आना चाहिए था। केप वर्दे कैरेड द मोमेंटम एंड नाउ दे आर इन द राउंड ऑफ 32। तो फिर ये चीज तो है। एंड आफ्टर दैट अभी 4-0 अगेंस्ट सऊदी अरब। दिस वाज द गेम कि उन्होंने बोला कि नहीं अब हो गया है भाई, केप वर्दे के अगेंस्ट हमने भाई बहुत जो चीजें करनी चाहिए थी, जो चीजें इनकी वीकनेस दिखी, that is in the first match that they drew against Cape Verde. They can go on and aram se after watching the highlights of this game, this has been the worst game I have seen, guys. In terms of Uruguay playing the, क्या बोलूं भाई, ये बहुत गंदा हराम बॉल खेला है इन्होंने। हराम बॉल क्या, वो लोग पैर वोर तोड़ने पे आ जा रहे थे भाई। अगले सीजन तुम देखना कि स्पेन के ऐसे आधे प्लेयर्स नहीं आते, तुम्हारा कुबारसी इंजर्ड रहता, फिर लामीन यमाल इंजर्ड रहता, ऐसे सीन रहते। तो खैर इससे ज्यादा क्या ही भाई। अभी हम लोग ये क्या है, गैस द रियल मैड्रिड प्लेयर, ये गैस उसका गेम नहीं खेलते हम लोग। ये क्या है, किचकी कच्ची गीली करनी है भाई। ये क्या है? हे ग्रॉक पुट अ क्राउन ऑन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। देखो दिस इज ऑनेस्टली बीइंग पेले। भाई इस पे कोई डिबेट नहीं है। प्लीज, आई एम नॉट अ मैराडोना हेटर, बट भाई मुझे देखना भी नहीं है। ये क्या है, इमेज ऑफ फ्रांसिस सुपरस्टार्स फेस ड्यूरिंग स्वीडन्स मैच। इसके पास 3 पिंपल है भाई, ये तो खाता भी है ना भाई। मैड्रिड के बाहर जाके तो खाता है। अब ये क्या है? कैरोलिन लेंजन, केविन डिब्रोइनस डिटिंग हिस्ट्री भाई। बेल्जियम। ये क्या है? $2000। ये क्या है? हे गॉक पुट लमीन यमाल। अभी देखते हैं ट्रांसफर हिस्ट्री में क्या चल रहा है। एक्चुअली ट्रांसफर हिस्ट्री तो भाई, ट्रांसफर्स में देयर इज ओनली वन गाय दैट कैन बीट इट। इट इज Fabrizio Romano, my guy Fabrizio Romano.
अभी देखते हैं ये क्या है। सांद्रो टोनाली deserby wants ideal step up for Tottenham Hotspurs. Lamine Yamal, oh my boy, star boy. मदालियन, ये कितना भाई, ये कितना भारी। ये क्या है, ये सिल्वर का है क्या भाई? कुछ भेज दे भाई। सिल्वर का इधर पे बहुत कॉस्ट पड़ता है इंडिया में। गोल्ड का पहन तू भाई। सिल्वर मेरे इधर भेज दे। अभी ये क्या है, ट्राब्जॉन स्पोर Wandonana, here we go. New loan deal. Ah, Onana not a part of MUFC. चलो तो फिर अभी क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं चैट? अभी क्या करते हैं? आंड्रे ओनाना बोनमouth में जा रहा है। अल्वारो रोड्रिगेज फ्रॉम एक्चुअली कल का जो सबसे ज्यादा ये क्या है, जो पालिना पालिना विल नॉट स्टे इन पर्स despite in the summer despite his desire to continue. Palinha. Palhinha was not included in Spain squad. I mean Portugal squad, right? ठीक है, I mean that's a fair shot. And ठीक है, खेल भी नहीं रहा। इंटर हाव आर्सेनल जीके केपा भाई डाउन हिल जा रहा है इसका बंदे का करियर। ये तो बैकअप गोलकीपर ही जा रहा है इधर। एंड फिर टाइमलेस केमिस्ट्री ग्रेटनेस डेविड बेकहम एंड पायरे आउंद्रे। भाई मैं वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, इधर पे कुछ कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। कई फाब्रिजियो मेरा चैनल ना देख रहा हूँ एंड उसके बाद मैं देखता हूँ। अभी इंटर अग्री ऑन डील विथ ये क्या चल रहा है भाई? अरे भाई ये पता नहीं मैड्रिड का कब आएगा भाई। मैड्रिड वाले तो छीन रहे एक्चुअली। बट अभी कितने मिनट बाकी है तुम्हारे किक ऑफ से कितना टाइम बाकी है? 22 मिनट ही बाकी है एसेंशियली। तो अभी स्पेन वाली टीम तो चली आएगी। अदर देन कैट क्या ही है, अभी मैच चालू होने में कुछ टाइम बाकी है। तो फिर कल यार, कल का गेम का ही थोड़ा बहुत देखते हैं। जब तक मैच नहीं चालू होता 22 मिनट थोड़ा बकबक करते हैं। बाकी तो क्या ही करना यार। अभी 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 नहीं तो कभी नहीं। अरे यार ठीक है। Santi Cazorla retires from professional football. Santi Cazorla, आई वोंट प्रिटेंड कि मैंने एक आध बारी नाम सुना इस बंदे का। Matthias Fernandes, new Spurs member, 85 million pounds. Move completed. I'm very excited for the next step. Spurs is a massive club and Deserby was a key part to why I've decided to join. ठीक है, Deserby अच्छा कोच है भाई, बट ब्राइटन वाला स्टेंट। देन वी हैव यंग अनप्रूवन। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है इस बंदे का। द squads in which he played has been relegated. If I'm not wrong, just let me have a fact check. Let me have a fact check. गाइस मैं थोड़ा डिफरेंट ब्राउजर में चेक कर रहा हूँ। मथायस फर्नांडेस, पहले google.com में जाते हैं, उसके बाद मथायस फर्नांडेस पे सर्च करते हैं। मथायस मथायस फर्नांडस मथायस फर्नांडेस वेस्ट हैम। एंड अगर मैं इसका प्लेयर प्रोफाइल चेक करके देखूं तो इसने खेला है टोटनहम हॉटस्पर्स के लिए। अच्छा ये तो अभी साइन हुआ है। वेस्ट हैम के लिए पिछले सीजन 36 गेम्स 3 गोल्स। साउथहैम्पटन के लिए तो साउथहैम्पटन 24-25 सीजन में रेलीगेट हुई, उसके बाद दे हैव बीन रेलीगेटेड टू, ओ माय गॉड, टॉटनहम हॉटस्पर्स नेक्स्ट। टॉटनहम हॉटस्पर्स नेक्स्ट भाई। दिस हैज बीन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड चैट, oh my god chat, this is going to be a game. I mean this is going to be a season for Tottenham Hotspurs. They have just completed their I mean they want to be relegated. What else man, what else? अभी और कितने मिनट बाकी है यार? एक तो ये मैच चालू होने का नाम ही नहीं लेता जब हम लोग देखते हैं। एंड क्या ही है यार। I mean, yeah, 19 minutes.
अभी देखो स्पेन का पिछला मैच देखते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ऑब्वियसली यूरुग्वे। स्पेन का लास्ट मैच का टैक्टिक्स कहाँ पे दिखेगा? आई थिंक नॉट द टैक्टिक्स बोर्ड, दिस इज अगेंस्ट इराक, दिस इज अगेंस्ट उरुग्वे। बायना ने स्कोर किया था इस मैच में। लाइनअप्स में देखते हैं पिछला गेम कैसा था हर बंदे के लिए। लामिन यमाल का रेटिंग इधर पे फुटमॉप में 6.9 दिखा रहा है, which I don't know in respect. 19 accurate passes out of 27, and I guess he had been subbed off earlier. ये इधर पे इसका हीट मैप है, इधर पे वो ऑब्वियसली इस जोन में ही ऑपरेट करता है। प्रीवियस टू दैट मैच इन द सऊदी अरब वाला मैच हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को प्रॉपर गेम पता चलेगा, प्रॉपर गेम प्लान हर बंदे का किस कैसे हुआ, हर बंदे का, आई मीन बाय हर बंदे इट इज एसेंशियली लमीन यमाल हु इज गोइंग टू प्ले। तो ऑब्वियसली इन स्पेसेस में वो ऑक्युपाई करेगा। देखो ये वाला जो डायगोनल आई मीन ये वाला जो जोन बनता है, बंदा इधर पे खेलते हुए ज्यादा दिखेगा द राइट विंग, एंड वो इनसाइड कभी ऐसे ड्रिफ्ट ऑफ करेगा, काफी कभी बार ऐसे इनसाइड कट में पासेस देगा। दिस वाज वन ऑफ द टॉप गेम्स एक्चुअली फॉर हिम। एंड अगर उसका शॉटिंग हम लोग देखें, उसका शॉटिंग हम लोग देखते हैं भाई, शॉटिंग नहीं देख सकते क्या यार? मैं नूब हूंगा भाई, मुझे नहीं पता होगा भाई। दिस वर द शॉट्स एक्चुअली, तो दिस वाज द फर्स्ट वन जो उसने ऊपर से मारा था। फिर इसमें एक गोल आया था, फिर इसमें फिर से उड़ा दिया था, फिर इसमें अटेम्प्टेड सेव, एंड फिर इसमें उड़ा दिया था। तो देखो इसके शॉट्स कहां से आ रहे थे? फिर से अगेन अगर इसका हीट मैप जाओगे, ये वाला जोन ही ऑक्युपाई करता है, एंड इधर से जाके he takes these zones to take his shots on। एंड अगर तुम इसका असिस्ट वाला देखोगे तो उधर से ही आता है, आई गेस असिस्ट ओयार जवाल को मिला था उस गेम में, 2 असिस्ट फॉर दैट वाज अ गुड गेम फॉर लमीन यमाल। अगेन हम लोग फिर से देखते हैं लमीन यमाल का ही, बिकॉज दिस गाय इज क्रेजी, दिस गाय इज क्रेजी, ऑब्वियसली दिस गाय इज क्रेजी। पेरू वाला मैच भी देखेंगे शायद, पेरू वाला मैच देख के क्या ही फायदा, बट हाँ ये देखते हैं भाई, ये लाइनअप्स में भाई साहब मोमेंटम चार्ट देख रहे हो भाई लौंडे, मोमेंटम चार्ट। फैक्स फैक्स तो देखने नहीं है अभी यार, देखो वोजेनिया का ही फैक्स निकलेगा पूरे मैच में। लाइनअप्स स्टैट्स, ये एक बार मोमेंटम चार्ट कहाँ पे, मोमेंटम चार्ट कहाँ पे दिखता है? मोमेंटम चार्ट, मोमेंटम चार्ट, मोमेंटम चार्ट, मोमेंटम चार्ट, मोमेंटम चार्ट नहीं दिखता क्या भाई? मोमेंटम चार्ट नहीं दिखता क्या? ओह हाँ इधर पे दिखता है मोमेंटम चार्ट, देखो भाई इस मोमेंटम से वोजीनिया ने जो निकाला था गेम भाई साहब, दिस शुड हैव बीन वन। 2 एक्सपेक्टेड गोल्स सेव्ड, 2 एक्सपेक्टेड गोल्स, 2 XG सेव किया था इसने। अभी तो फिर भाई अब इसका फुटमॉब में इस मैच का देखते हैं ऑड्स। व्हाट आर द ऑड्स? ऑड्स क्या है इस मैच के? ओ भाई, भाई साहब ऑड्स नहीं दिखते क्या? ऑब्वियसली इस मैच का तो चालू हो गया होगा, कमेंट्री पे देखते हैं। लुइस डेलाफोंटे, इट्स अ प्रोसेस, a path we travel, the competition is different and the opponent is different, there are different styles of football. Crazy, when you are defeated against, you are drawing against Cape Verde, it obviously makes more sense. Other than that अभी थोड़ा हम लोग फिर से देखते हैं यार। In the meanwhile, let's go to भाई साहब, भाई ये ट्विटर मुझे मार देगा एक दिन भाई, ट्विटर मुझे मार देगा, ट्विटर मार देगा। अरे ट्विटर भाई यार, वन ऑफ देम हैज टू लीव। ये अगले मैच में होगा वैसे गाइस, ये अगले मैच में होगा।
अगले मैच में होगा, अभी अभी तो नहीं देखते, अगले मैच में होगा। ओ भाई, ये क्या है, लेवल वेरी हार्ड। नेमार, अबे चलो एक कर ही लेते हैं। ये नेमार के साथ खेला है, ये मेसी के साथ भी खेला है, साला के साथ भी खेला है। इट इज वेरी इजी एक्चुअली, यू नो गाइस। देखो, ही प्लेड विथ साला इन लिवरपूल, तो ऑब्वियसली एक बंदा जो ब्राजीलियन भी है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ फिलिपी कोटिन्हो। एंड ये एक टाइम पे बार्सिलोना में भी था। तो जब नेमार छोड़ के गया था, उससे काफी सारे पैसे आए थे। एंड उस सीजन इन विच नेमार लेफ्ट द प्री उससे प्रीवियस वाले सीजन में कोटिनो प्लेड फॉर लिवरपूल। अब बारसा के पास था बहुत पैसा भाई। उन्होंने बोला कि चलो लाते हैं हम लोग, नेमार का रिप्लेसमेंट लाना है, वो ब्राजीलियन ही होना चाहिए, हम लाते हैं भाई। ये देखो, ऐसा ऐसा एक बंदा है फैब फोर करके, वो तोड़ रहा है भाई, फर्मिनियो और साला और माने के साथ। भाई इसको हटाना पड़ेगा, इसको तोड़ते हैं, इसको लाते हैं। एंड भाई फिलिपियो कोटेनो, भाई बंदे का बर्बाद कर दिया करियर। बारसा वालों ने कर बर्बाद कर दिया बंदे ने, बंदा बायर्न गया। एक्चुअली एक्चुअली ऐसे तो दो करियर्स बर्बाद हुए हैं, हामेस रॉड्रिगेज एंड फिलिपी कोटिन्हो, दोनों गए बार्सिलोना। बट एक तो चलो, एक ने तो एक्चुअली बारसा को ट्रॉमा दे दिया भाई, 8-2 का ट्रॉमा दे दिया भाई, 8-2 का ट्रॉमा तो दे दिया भाई। ये क्या, वैन डायक सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अमेरिका रॉकिंग रोनाल्डो पोर्टुगल जर्सी। भाई ये एआई जनरेटेड है मोस्टली आई गेस। एंड ऐसा कुछ है नहीं भाई, तुमको पब्लिकली बहुत बैशिंग पड़ती है, ये क्या है भाई। तारे तारे एस्प्रो, दाएं दाएं, ये क्या है। एम्बाप्पे इन पीएसजी, बहनचोद इधर पे फाइनल नहीं, यूसीएल नहीं जीत पाया। अनलकी गाय, इधर पे बस स्टैट पैड करता रह गया भाई। वैसे स्पेनिश लीग में भी वही करता है, स्टैट पैड। ये आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस भाई, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस भाई, दिस इज अमेजिंग भाई। सेनेगल आफ्टर कंसीडिंग पेनल्टी, भाई ये लोग यही करने का आए हैं भाई, ये लोग। भाई इनको मैच मिल जाता है, बट भाई इनको क्या करना है। नहीं, सब अपने पिच से हटाओ यार, सब अपने पिच से हटाओ। भाई सेनेगल एक्चुअली अभी अफ्रीकन चैंपियंस होती ऑनेस्टली भाई, अपने ऑनेस्टली वो खेलते अच्छे से। भाई वो बकचोदी नहीं करते, तो वो लोग अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में अभी वो उठा रहे होते। बट यार सेनेगल, क्यों यार, क्यों करना है ये सब। एक्चुअली मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैंने हाईलाइट्स नहीं देखी है गाइस। चलो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैंने बस स्कोर कार्ड देख के किया है। ये कौन सा है लेटेंट अब। अबे बहन चोद, बैन करवा के मानेगा। बैन करवा के मानेगा, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बकचोदी है। हाँ कैमरा मैन, ये इंस्टाग्राम पे आया था भाई। ये आई प्लेड विथ भाई, बकचोदी नहीं करनी मुझे। ये क्या है, अरे रेग्ड भाई, बैलोन डोर रेग्ड भाई, रेग्ड बैलोन डोर, लमीन यमाल को मिल चुका है बैलोन डोर। एनीवेज, फिर हमारे आते हैं इधर पे। ये क्या है भाई, ये क्या है, अबे यार फिर से आ गया यार, पिंपल यार, छी यार। Hey Grok, remove the worst Brazilian here. Why worst Brazilian? Why Vinny Jr.? No hate, buddy. Vinny Jr., you are going down. No offense. These guys, these three are far more goated. अभी जो करना है सो करना है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी मैच चालू होने वाला है ना, 10 मिनट में। अभी देखते हैं लाइनअप्स का क्या सीन चल रहा है, कैसा सीन चल रहा है।
अभी देखते हैं बहन, अभी देखते हैं बहन, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं मैच, अभी देखते हैं मैच। ये क्या है? अरे भाई, ओके, ये थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दो यारा। ये वीडियो कैप्चर ना थोड़ा सही से बैठ नहीं रहा। ये वीडियो कैप्चर गलत बैठ गया है। ये वीडियो कैप्चर गलत बैठ गया है। एंड अभी मेरे को ये ब्राउजर से चेंज करने दो। एंड अभी मैं इस पे लाऊंगा। ठीक है, ये ब्राउजर में ये सेटअप करने में जो फटती है। ठीक है, इसको ऑप्शन बटन क्लिक करके, इसको ऑप्शन बटन क्लिक करके इधर से हटा के इधर देते हैं। एंड अभी बन गया। राइट, राइट, राइट गाइस। अब एक बार फिर से इसको वीडियो कैप्चर वाले को सही से करते हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको दिख रहा हूं मैं। अभी थोड़ा दिख रहा हूँगा। अभी मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है भाई। सेल्फ ऑब्सेशन ऑन टॉप भाई, सेल्फ ऑब्सेशन ऑन टॉप। अभी तो इस हिसाब से हम लोग मैच देखेंगे, अभी देखेंगे कैसे मैच चालू होता है सब। ओके, अभी चालू हो रहा है मैच। लेट्स सी। ओ, अभी नेशनल एंथम्स बजेंगे राइट। अभी छोटा सा बच्चा आया है। अरे यार, थोड़ा और छोटा करूं क्या भाई? पता नहीं स्क्रीन में कैसे देख रहा हूं मैं। 7 व्यूज? भाई 7 लोग आए भी थे, मुझे बस 7 कमेंट्स आए भाई। ओके, आई गेस ओबीएस में जाके थोड़ा एक और बार वीडियो कैप्चर का वो ठीक करता हूँ, क्योंकि भाई अब तो थोड़ा ज्यादा ही अजीब अजीब लग रहा है। भाई मेरे पीछे वाला वॉल दिख रहा है क्या? एस्थेटिक एकदम, एस्थेटिक वॉल भाई। एस्थेटिक, एस्थेटिक के चौदह, एस्थेटिक के 14। भाई कोई आ जाओ देखने, बट ठीक है। अभी फर्स्ट मैच में देखते हैं कैसे क्या सीन चलता है आज के फर्स्ट मैच में। उसके बाद भी हाँ, पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया। बच्चा आ गया। हम्म। अभी 10 मिनट यही चलेगा। और अभी देखते हैं भाई। ये स्पेन का 17th वर्ल्ड कप है अभी फिलहाल तो, मतलब 13वां बार इन्होंने कंसेक्यूटिवली क्वालिफाई किया है। कंपेयर दैट टू अदर टीम्स मैन, काफी टीम्स तो क्वालिफाई नहीं करती इतनी टाइम्स। जस्ट फॉर एग्जांपल इटली, 3 consecutive times they have not, 3 consecutive times, that's heavy man, that's heavy. 4 time champions, 4 time champions, we have 4 time champions Germany as well. But वो अलग बात है कि they are getting knocked out of the round of, what to say, what to say. This is the round of 32 man. You can't get knocked out of here. बट हाँ, एक जो चीज ये गारंटी कर रहा था ये फॉर्मेट, ये है कि एक बड़ी टीम या फिर 2 बड़ी टीम तो ये पक्का से पक्का इधर पे जाएगी। अभी स्पेन का नेशनल एंथम हो रहा है भाई, मैं नहीं खड़ा हो रहा भाई, जितना भी वो हो जाए। क्योंकि स्पेन जाना है, बट स्पेन नेशनलिटी नहीं है अपनी। ये बकचोदी मान लो थोड़ी। बट एनीवेज, पेद्री, ओयाrzabal, ओल्मो, Lamine Yamal, and who the fuck is this? Fermin, क्या पता भाई। De La Fuente, De La Fuente। तो ठीक है, अभी स्पेन का नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद अभी होना है ऑस्ट्रिया का नेशनल एंथम। अभी देखना है भाई। अभी भाई मैच चालू करूँ ना एकदम डायरेक्ट से, बट ठीक है। अभी थोड़ा फॉर्मेशन चेक कर ले क्या भाई? फॉर्मेशन फॉर्मेशन अपडेट करते हैं ये लोग? आई डोंट थिंक सो फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। आई डोंट थिंक सो फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। आई डोंट थिंक सो फॉर्मेशन अपडेट करते हैं।
एक बार देख ही लेते, फॉर्मेशन अपडेट करते क्या, प्रीव्यू। नहीं यार, फॉर्मेशन तो फील्ड पे ही पता चलेगी, फॉर्मेशन अपडेट तो फील्ड पे ही पता चलेगी। देखो कॉन्ट्रैक्ट लाइमर एंड सबिट्जर के हाफ से मुझे देख कर आया कि थोड़ा खतरा आ सकता है, तो मतलब बट बट वी हैव, ओ माय गॉड, पेड्रो पोरो इधर पे खुल सकता है, एंड हमारा इधर पे पेड्री विल ड्रॉप, रॉड्री विल ड्रॉप इन, एंड कोबारसी विल एक्चुअली देखना, कोबारसी will check in on because Rodri will drop in forming the third back, and फिर ये दोनों भाई, ये कुकुरिया भी थोड़ा डिफेंसिवली सॉलिड है, कुकुरिया एक्चुअली इज डिफेंसिवली सॉलिड। पेड्रो पोरो ऑन द अदर हैंड आई डोंट एग्री, बट पेड्रो पोरो के साइड से अटैक खुल सकती है, तो ये इधर से इधर विल बी जगलिंग भाई, ये देखो कुकुरिया विल बी भाई जंपिंग बिटवीन बायना एंड, मतलब इधर पे जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही होंगी, एसेंशियली रॉड्री विल ड्रॉप इन हियर फॉर्मिंग अ थर्ड बैक, एंड तुम्हारी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही बिटवीन पेड्री, ओल्मो एंड बायना, फिर तुम्हारा, या फिर यू कैन से पेड्री, ओल्मो एंड ओयारजबाल, ये तीनों ट्रायंगल्स फॉर्म होते रहेंगे, एंड पोरो विल एक्चुअली एसेंशियली पास द बॉल टू लमीन यमाल, मतलब प्रोपगेट करना है उसका काम, एंड जब भी डिफेंसिवली खुल रहे होंगे तो आई थिंक कुबारसी विल इजीली ड्रॉप इन, आई थिंक दैट शुड बी इट। So yeah, this is how the game should work, and mostly फिर देखो Alaba, Kevin Danso, no respect, no disrespect to anyone, but ठीक है, these are the two recognized players. Other than that, I think क्या ही करना है, राल्फ रैग्निक, आई थिंक द फादर ऑफ गेटिंग गेगन प्रेसिंग, ठीक है। स्पेन का ये क्या है, स्पेन हैव क्लिप्ड 10 शीट, क्लीन शीट इन 13th matches. Lamine Yamal has scored his first World Cup goal in over 4. अच्छा हाँ, लमीन यमाल का तो गोल इसके बाद आया ही नहीं, राइट, ऑल राइट। तो बायना का गोल आया था लास्ट मैच में, एंड देन वी हैड लमीन यमाल का वन असिस्ट वन गोल आई गेस अगेंस्ट सऊदी। ओयारzabal का अच्छा गेम था एक्चुअली इन दैट मैच, उसका दो गोल एंड एक असिस्ट आया था, एंड ठीक है, अभी जिस हिसाब से इनके पास बेंच स्ट्रेंथ, एक्चुअली बेंच स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि बेंच से कौन से प्लेयर्स ये लोग लेके आते हैं। आई थिंक अगर कुछ डिफेंसिवली तो ये लोग सॉलिड लग रहे हैं, मार्क प्यूबिल, मार्कोस लोरेंटे, अलेक्स ग्रिमाल्डो, ग्रिमाल्डो आ सकता है लेटर ऑन, गावी को मैं नहीं लाऊंगा अंटिल मुझे चाहिए एक डिसरप्टर। देन वी हैव मार्टिन जुबिमेंडी, जुबिमेंडी एक्चुअली डिड नॉट, मुझे पता नहीं, बट हाँ, अगर ओयारzabal का गेम थोड़ा भी लुढ़का, या फिर लगा कि ऑलमो कांट प्ले दिस गेम, तो फिर आई गेस वी हैव अ प्लेयर ऑन कार्ड्स। आई थिंक इट विल बी मिकेल मरीनो, मिकेल मरीनो का गेम आज बन सकता है, या फिर भाई देखो ओयारzabal का गेम नहीं निकला तो ये लोग ऑब्वियसली फेरन टोरस को खिलाएंगे, एंड देन ऑब्वियसली बायना का गेम जब देखना बंद हो जाएगा, देन वी हैव निको विलियम्स, विक्टर मुनियोज इज अगर अगेन अ बिग बिग, नॉट अ बिग प्लेयर, बट ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन है इनकेस तुम्हारा गेम फंसता है एंड ऑस्ट्रिया निकालती है एक 90 मिनट तक ड्रॉ गेम, तो देन यू कैन हैव एन अटैकर लाइक विक्टर मुनियोज, जिसकी प्रोफाइल आई गेस है काफी। ओ हाँ, बाय द वे, वी हैव मार्क आर्नोटोविच in Austria, who isn't starting right now. So I think second half में और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाय द वे, गेम स्टार्ट हो गया है, एंड आई विल जस्ट लीव इट टू दैट अभी फिलहाल के लिए। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं, मैच को देखते हैं, एंड हम लोग देखेंगे कैसे चलता है मैच। तो फिर एक्चुअली स्क्रीन पे हो रहा है या, ओ ना, मैच अभी तक चालू नहीं हुआ, राइट, या फिर वो चालू हो गया है। Okay, everybody is on the field right now, guys. तो मैच चालू होने वाला है, जस्ट दैट कि ये अभी तक चालू नहीं हुआ। ओके,
Guys, I don't think so मेरा properly चल रहा है. I don't know is it delayed or not. नहीं, I think it's proper. अभी तक चालू नहीं हुआ and I अभी चालू होगा. तो फिर लेट्स गो. फर्स्ट बॉल, ये लोग बैक पास किए. पेड्रो पोरो गोइंग टू, अरे लमीन यमाल को फाइंड करने का कोशिश कर रहे थे ये लोग. डैनी ऑल्मो ड्रॉपिंग बैक, हेल्पिंग द डिफेंस, बट ये पहले एक फाउल इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रिया. एंड आलाबा के बाद केविन डांसो बैक पासिंग इट टू द गोलकीपर. और जबाल का प्रेस है, ऑन है. देन लमीन यमाल प्रेसिंग. लमीन यमाल, ये है बॉल टुवर्ड्स Sabitzer. Sabitzer trying, will he try to cross? A cross, but Kubarsi. Is it Kubarsi? I don't know if it was Kubarsi or not. Oh goodness. Okay. Yamal. Yamal Baena. Yamal again. Yamal is a shot, but ठीक है. अभी के लिए फिलहाल तो ठीक है. अभी चल रहा है यार. Yamal with the first shot of the game and it's 2 minutes on the clock. ठीक है. It was an easy save actually. Not much, nothing generated. David Alaba, the captain. ओके. 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 देखो अभी के लिए तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने पास पोजीशन रखे. आई गेस ऑस्ट्रिया इज जस्ट राइट ट्राइंग टू कीप द पोजीशन फॉर राइट नाउ, क्योंकि ना इन्होंने अपना इंटेंट क्लियर दिखा दिया है कि दे वांट टू स्कोर द गोल फॉर नाउ. बट यार देखो, ये एक्सप्लोसिवनेस अबाउट स्पेन इज ग्रेट. क्लियर अगेन. मुझे दिख रहा है ऑस्ट्रिया वांट टू गो, हाउ ऑस्ट्रिया एक्चुअली वांट्स टू गो अबाउट दिस गेम. दे वांट टू स्कोर अ गोल एंड जस्ट सिट बैक. देखो उनका क्लियरेंसेस से नजर आ रहे. दे डोंट वांट टू ईट अ गोल एट एनी कॉस्ट राइट नाउ. वो उधर से पास निकल सकता था इवन इफ आई एम रॉन्ग, बट ओके. अगेन बैक टू द गोलकीपर, सेफ्टी. केविन डांसो. केविन डांसो इन. डानी ऑल्मो का प्रेस है, बट ऑस्ट्रिया इज स्टिल गोइंग फॉर इट. ओके. ओके. ऑफ साइड हो सकता है क्या? ऑफ साइड का फ्लैग अप नहीं है. एंड दैट्स अ थ्रो इन. दैट्स अ थ्रो इन गाइस. ओके. दैट वाज अ गुड रन फ्रॉम बायना एक्चुअली भाई. बायना के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है इस गेम में. आई गेस बिकॉज लमीन यमाल पे कॉर्नर लाइमर चला रहेगा, तो इट इज दैट विंग जिससे आई गेस स्पेन को कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड डोमिनेट. एंड देखो फर्स्ट अटैक में जो देखा था, द आई थिंक मैंने जैसे हीट मैप में दिखाया था, द मैच इन विच लमीन यमाल वाज फैबुलस अगेंस्ट सऊदी. उसके शॉट्स जो आ रहे थे, दे वर मोस्टली from the left right hand side, I guess. Yeah, it was right hand side. Yeah, no, no. Yeah, right hand side. Okay, yeah, Yamal again on the, okay. Baena, Yamal recovery. It's Baena, Yamal corner. तो स्पेन जो दिख रही है ना, स्पेन इज बहुत एक्सप्लोसिव इन द अटैक. बॉल मिलते ही दे आर जाए भाई, हम लोग तो मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए देख रहे हैं. And I think that's just how it's working for them. Currently, just let's see. Okay, who is taking the corner? Oh my
कॉर्नर टेकन, शॉर्ट कॉर्नर एंड ऑफ साइड को तोड़ने की कोशिश थी एसेंशियली उस शॉर्ट पास में। एंड अभी ये बॉल लूज कर दिया है। सबित्जर के लिए बॉल बनाया है इन्होंने अपने लेफ्ट विंग पे। सबित्जर गोइंग, नॉट ऑल गन्स ब्लेजिंग, ही इज ट्राइंग टू फाइंड प्लेयर्स। बैक पास किया, कॉर्नर लाइमर, लाइमर ने फिर से देखा, बैक पास किया एंड देन अगेन। ये गेम अभी कंस्ट्रक्टिवली जा रहा है। अब लमीन यमाल को बॉल मिलने ही वाला था, ही इज डिसअपॉइंटेड विद द टच। तालाबा, ऑल्मो का प्रेस, सबित्जर, सबित्जर ने थ्रू बॉल निकाली बट मोस्टली ऑफ साइड है। ये ऑफ साइड है, ऑब्वियसली ये तो ऑफ साइड है, माइल से दिख रहा था। वो थ्रू बॉल का इंटेंशन अच्छा था बट प्लेयर पोजीशनिंग इज टू। यमाल का भाई, यमाल जैसे ट्विस्ट एंड टर्न करता है मैचेस में भाई, दैट इज कमेंडेबल यार। यमाल का गेम देखने में एक्चुअली अच्छा लगता है। कॉर्नर लाइमर, लमीन यमाल, इनका ही अभी चल रहा है। अपॉन दैट अभी कॉर्नर लाइमर को उतना गेम दिखा नहीं है। जस्ट लेट्स सी कि he shows up because he is a quality player. ऊनाई सिमोन से अभी पूरा गेम कंस्ट्रक्टिव और जैसे देखा अभी किया शिफ्ट टू थर्ड बैक एंड अभी देयर इज अ पास। पेड्रो पोरो चढ़ा हुआ है ऊपर, पेड्रो पोरो चढ़ा हुआ है ऊपर। देन अगेन वी हैव अ पास। ओ दैट वाज, ओ क्विक रिकवरी, ट्रायंगल्स में प्ले बनता हुआ। देन वी हैव यमाल, यमाल लुकिंग फॉर अ पास, पास ऑलमो। Oh my God. Oh my God, that was near. That was near, bhai. 7 minutes into the game, I think that's already three or four shot. Kukureya का ball. Okay. Okay, Kukureya actually earned the corner. That was nice of him. Spain का second corner. Obviously, अभी ये बायना लेते हुए from the left corner. Obviously, right foot के inside से आते हुए एंड अभी गया। ओ दैट वाज अ क्लियरेंस बट अभी फिर से एक और कॉर्नर आया लपोर्ट के लिए। बॉल सप्लाई की गई थी बट द लास्ट टच वाज दैट ऑफ आलाबा। नो नॉट ऑफ आलाबा बट यार ठीक है। अनदर वन, थ्री कॉर्नर्स ऑलरेडी इनसाइड 8 minutes। ये क्या हुआ? ओके, इट वाज लुक्ड इनटू अगेन एंड officials have decided that this is a goal kick, obviously। एंड अभी यमाल बॉल विन करते हुए, बॉल विन किया लमीन यमाल, कॉनराड लाइमर। अभी कॉनराड लाइमर ने अभी फर्स्ट 1v1 में तो चलो देखा है कि यार दिस इज अ गाय टू बीट। नेक्स्ट क्या है? कॉनराड लाइमर, पेट्रोपोरो का दूर से लिया हुआ थ्रो इन, पर उसने मोमेंटम लूज कर दिया एंड व्हाट इज दैट भाई? बॉल बहुत ऊपर एंड गोलकीपर डिसबैलेंस बट बायना एंड देन दैट्स अ क्लियरेंस अगेन अ थ्रो इन। भाई थोड़ा दूर से जब लेने की कोशिश कर रहे थे, दूर से लेने की कोशिश करो ना भाई, उसको थ्रो इन करो ना अच्छे से। दैट्स मोर लाइक अ कॉर्नर किक। अगेन मार्क कोकोरिया, कोकोरिया थैंक थ्रो इन, किसको पास करे?
Rodri is there even. Baenako. Then goes back to Kubarsi. Kubarsi to Boro. Kubarsi. Laporte. Kokoria. This is then Olmo को फॉल एंड फ्री किक मिलना चाहिए फ्री किक मिला एंड ये कहाँ पे मिला है एग्जैक्ट द पॉइंट जहाँ पे इट्स ओके को फ्री किक को ले लिया जल्दी यमाल वर्सेस ओ ओके 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 आई थॉट लमीन वाज टेक ओनिंग इट आई थॉट लमीन वाज ओनिंग इट कोकोरिया कोकोरिया passing it to Baena 2 man on Kokoria Baena okay Baena is this a third corner or this is the fourth corner? I think this is the third corner, right? Last corner was deemed. हाँ भाई डाइविंग करोगे तो ऐसा ही होगा डाइविंग नहीं करना है भाई डाइविंग नहीं करना है तुम्हारे पास स्किल एनफ है भाई उसको कटाओ भाई उसको कटाओ पाए ना कुबारसी कमिंग इन अभी बॉल गोज फॉर बायना बायना रॉड्री जाएगा रॉड्री किसको पास करेगा पोरो रॉड्री पासिंग इट टू बायना मिस पास हो गया है थोड़ा बॉल बाहर गई है ना राइट आई मीन दैट वाज पता नहीं चलो गाइस थोड़ा एसी ऑफ कर लेते हैं बिजली का बचत भी करना है ऑलरेडी रात के 12:30 बज रहे हैं राइट मॉर्निंग 1 बज रहे हैं अभी डिफेंसिव जा रही है उनाई सीमोन उनाई सीमोन बॉल को होल्ड करते हुए गेम का इंटेंसिटी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट या लेट्स सी ओके ओके उनाई सीमोन भाई स्पेन थोड़ा डिफेंसिव जा रही है आई गेस दे आर ट्राइंग टू कंजर्व द एनर्जी आफ्टर द फर्स्ट 10 15 मिनट्स लोग ट्राई कर रहे हैं कि अभी अभी देखते हैं हाउ ऑस्ट्रिया एक्चुअली रिएक्ट्स अभी एनर्जी कंजर्व करने का मौका मिलेगा एंड वंस दे डू दैट क्योंकि अभी हाइड्रेशन ब्रेक आना है तो अदर देन ब्रेकिंग द मोमेंटम फॉर नाउ लेट्स कीप इट दैट वे अभी लेट्स चेक देम आउट बिकॉज देखो ऑनेस्टली फुटबॉल इज नाउ बिकम गेम ऑफ क्वार्टर्स एंड अभी इसको कार्ड इशू होएगा आई थिंक दिस इज द कार्ड ऑनेस्टली जैसे ओयर सवाल फॉल किया बट आई डोंट थिंक सो कार्ड इशू करेगा बिकॉज इसका दैट वाज एन एल्बो वाज दैट एन एल्बो
दिस इज अ फर्स्ट वार्निंग आई गेस। इतनी जल्दी एक बंदा कार्ड नहीं निकालता। हमने मैच के पहले ही देखा था कि ओके ओके ओके, he has warned him the next one would be a card. I think Oyarzabal, I think he won't mind it। अभी देखते हैं कि हाउस रॉड्री को पास जाएगा या फिर डैनी ओल्मो को पास जाएगा। आई डोंट नो, रॉड्री को पास गया। आफ्टर दैट डैनी ओल्मो, ओ ले ऑफ, डैनी ओल्मो मिसेस इट एंड Sabitzer गोइंग फॉर इट। देखो स्पेन अभी चाहेगी कि डिफेंसिवली वो लोग सॉलिड रहे एंड दैट वाज सॉलिड, दैट वाज सॉलिड। पेड्रो पोरो, दैट वाज नाइस, दैट वाज नाइस। ओके, कोकोरिया, दैट वाज अ बैड वन। ट्विस्ट एंड टर्न पे फॉलो किया कोकोरिया ने, बट यू नो व्हाट। अरे गाइस, अभी पता है भूख भी लग रही है मुझे, मैंने अभी तक कुछ डिनर नहीं खाया। एंड अगला गेम जो है पोर्तुगल क्रोएशिया के अगेंस्ट, उससे पहले मेरे को काफी नींद आ रही है। पता नहीं हाउ लॉन्ग आई वुड बी एबल टू कंटिन्यू बिफोर दैट, बट या लेट्स सी। अभी आई थिंक टेक ऑफ फुटबॉल हैज नाउ बिकम गेम ऑफ क्वार्टर, सो दे आर जस्ट ट्राइंग कि लेट्स कीप इट इन दैट वे। एंड या अगर ये लोग हर्ट कर पाते हैं देन दे वुड ऑब्वियसली ट्राई टू हर्ट, बिकॉज ऑस्ट्रिया को पता है दे वोंट गेट मच मोमेंट्स, दे हैव टू प्ले इन मोमेंट्स। बट देयर आर जस्ट 6 or 7 minutes लेफ्ट इन दिस क्वार्टर, दोस्तों, इन दिस क्वार्टर। ओके ओके ओके, ये गुत्थम गुत्थी चलती हुई। ओयारzabal, Sabitzer, I mean Sabitzer, that was a nice pass and cross. Oh my god, that was a miss. That was a miss, bhai. They could have hurt. They could have hurt. They could have hurt. They could have hurt. But yeah, never mind. Again, one more chance. But that was a nice clearance. Again, going for it. Pedro Porro supplying to Lamine. Pedro Porro. Pedro Porro goes for the run. Tries to find Oyarzabal. Alex Baena on there. Baena will pass it to Kukuria, maybe Danny Olmo. Danny Olmo, Kukuria. Danny Olmo again. Goes to Rodri. अब ये सिर से बैक से बिल्ड होना चालू होगा। Again, goes to goes to Yamal. Yamal trying. Yamal का beautiful ball towards Poro. Oh, that was near about to finding Danny Olmo. And I think that was a brilliant ball by Pedro Poro. Only a bit, only a tiny whisker. Only a tiny whisker. Only a tiny whisker, guys. Only a tiny whisker. Yamal for it again. Yamal couldn't find the proper position in the box, but that is where he hurts maximum. पोरो ने सैविजर को गिराया। अभी चलेगा, चलेगा गेम ऐसे ही चलेगा। अभी अभी 3 मिनट they will try to put the tempo down, but on the other hand Austria would try to hit back, passing it back to their goalkeeper Kevin Danso. But you have to also put the thing in fact कि स्पेन ने अपने लास्ट 3 मैचेस जो थे they have not conceded any goal, so they will obviously be have to be defensively solid.
I guess, yeah, there were teams like Cabo Verde at the end of the day. Then Uruguay, they had no intent of shooting. Then they had Saudi Arab. So they should have had not conceded any goals. But then again, we have seen a lot in this World Cup already. Again, going for it. Let's okay. So Yamal, Yamal on it. Yamal छकाते हुए लाइमर और साबित्जर दोनों को ओ दैट वाज सच अ गुड वन बट साबित्जर दोनों उधर पे मार्क करते हुए अदरवाइज यू कांट डिफेंड दिस गाय दोनों ग्रेगोरिच ट्राइंग टू कीप द बॉल इन बट अनसक्सेसफुल स्पेन के लिए थ्रो इन दैट वाज अ क्रेजी नटमेग इफ ओनली देयर वाज नो साबित्जर that could have been a beautiful cross by Yamin Mal. Kokorea on the ball, going back to again Rodri. Beautiful placement. रॉड्री का गेम बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक रॉड्री हैज प्लेड ब्यूटीफुली यमाल रॉड्री रॉड्री बैक passes then goes to Kokoria Kokoria goes to Baena oh यार Zabal free on but that was collected by the goalkeeper okay अब जैसे I guess 40-45 seconds बाकी है till the referee calls for it and until then we'll just watch it guys we'll just watch it. And then we have back pass again. At this point, बस back pass करो यार. Game का momentum break करो. You don't want Austria to head back at this moment. I think Spain will be defensively very solid. They're expected to be so. Yeah. Time for drinks break maybe. Until the next play break, they'll just want to hold on. Yeah, play break. No, it's not a play break. It's a play break. And time for hydration break. Hmm. तो there's a lot of booing in the stadium, but honestly, can't blame it. फुटबॉल का गेम थोड़ा क्या बहुत ही चेंज हो गया जब से वी हैव इंट्रोड्यूस दिस हाइड्रेशन मैं कब से बोल रहा था लास्ट 5 मिनट से मैं यही बोल रहा था आई गेस ओके लेट्स गो बैक टू हियर अभी देखते हैं स्पेन ने कितने स्टार्स बनाए हैं एंड आई थिंक दैट शुड हैव रिजल्टेड इनटू वन गोल एटलीस्ट दैट वाज अ ब्रिलियंट पास बाय पेड्रो पोरो अभी तो फिर commentary lineups facts this is the momentum chart yeah Spain has carried it throughout okay three shots no big chances actually maybe yeah zero big chances eight touches in opposition box they Austria have zero touches in opposition box shot on target was that of Lamine Yamal and for accurate passes, corners, they lead in everything. They lead in everything. Hit the woodwork. They would lead soon. You just introduced Fermin Lopez. Fermin Lopez, Ferran Torres. Sorry. No, no, no hate. Fermin Lopez. Ferran Torres. He'll hit the woodwork. Spain will lead in that as well. And
अभी के लिए देयर हैव बिन, अभी इसका हीट मैप चेक करते हैं, प्लेयर्स का हीट मैप चेक करते हैं। अभी तो 30, ठीक है, टचेस इधर पे मिले हैं। एक्चुअली आई व्हाट आई सॉ टुडे इज Lamine Yamal during the first few minutes trying to go here. उसका असली गेम तो इस पोजीशन पे ही आता है, रादर इस पोजीशन पे, बट वो अभी, द थिंग इज दैट बोथ गाइज हैव बीन डिफेंडिंग, लाइमर एंड सबेट्जर ऐसे इतने अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं कि उसको इन स्पेसेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो द क्रॉस विच केम फ्रॉम इज एक्चुअली फ्रॉम पेड्रो पोरो। तो एक्चुअली जो चीज मुझे होती हुई दिख रही है इस की लमीन यमाल के पीछे इंट्रोड्यूस एटलीस्ट टू प्लेयर्स। लाइमर अलोन इजंट एनफ, बिकॉज लाइमर अलोन को वो ना ऐसे नट में करके नचा के चला जाएगा। वो बोलेगा भाई ऐसे चूड़ियां तोड़ के चाह, मैं तुझे नचा के चले जाता हूं। एंड ऑब्वियसली सपोर्ट करने के लिए पेड्रो पोरो का गेम इधर पे ही निकलता है। Then Rodri, obviously his touches have been everywhere in the central force. उसको हर जगह जाना ही पड़ेगा। I mean, these are the areas where you need him. कुबारसी का गेम डिफेंसिवली हैज बीन सॉलिड टिल नाउ, बट ये वाला जो अपॉर्चुनिटी आया था, आई डोंट थिंक सो भाई, ये थोड़ा लूज छोड़ दिया होता तो भाई ये थोड़ा खत्म हो जाता, खत्म सीन हो जाता। लपोर्ते का गेम ठीक है, इट्स फॉरवर्ड एग्रेसिव। कोकोरिया अगेन, बायना का गेम एक्चुअली अच्छा गया है टिल नाउ। आई थिंक बायना हैज बीन टोटली डोमिनेंट, रेड हॉट इन दिस जोन। अभी फिर से मैच चालू हो गया है, जो लेट्स जस्ट डाइव बैक इन, लेट्स जस्ट डाइव बैक इन। कोकोरिया का फर्स्ट थ्रो इन है। अभी फिर गोइंग टुवर्ड्स रॉड्री, रॉड्री गोइंग टुवर्ड्स ओल्मो, ओल्मो टुवर्ड्स पेड्रो पोरो, पोरो नाउ टुवर्ड्स यमाल, यमाल के लिए लाइमर, लाइमर एंड सबेट्जर, पोरो, पोरो द क्रॉस। ओके, दैट वाज अ फास्ट वन जो पोरो कंट्रोल नहीं कर पाया एक्चुअली। तो एक्चुअली देखो, मैंने अभी जो हाइड्रेशन ब्रेक में जो बात कही वही वाला हो रहा है सीन, कि यार लमीन यमाल को डिफेंड करने के लिए यू नीड टू पीपल, टू पीपल, यू नीड टू पीपल। देखो लाइमर अलोन वोंट बी एनफ, सो दिस इज एन इशू। तो एक्चुअली ये इशू को एक्सप्लॉइट करते हुए ही वो पास जो निकला पेड्रो पोरो के लिए था, बिकॉज लाइमर एंड सबेट्जर हैड बीन फुली कंसंट्रेटेड टोटली अपॉन यमाल की, यमाल कुछ करेगा, यमाल इधर से क्रॉस निकालेगा तो हमको उसको कवर करना है। अगेन देन वी हैव सीन, ओके, ओके, ओश, ओल्मो का टर्न था, ओल्मो का टर्न था, दैट वाज अ सुपर्ब डिफेंडिंग, दैट वाज अ सुपर्ब डिफेंडिंग, दैट वाज सुपर्ब डिफेंडिंग। Oh my God. Oh my God. That was a momentary lapse. हो सकता था ये गोल. And then we have Yamal taking the corner. This is the fourth corner. Oh, Kukuria! Kukuria scores it! Offside call कर दिया, I guess. I don't think so. I don't think so. But ये इसका वार चेक तो जरूर होगा, and it will kill around 3 to 4 minutes easily. Let's see क्या होता है. What even happened here? रॉड्री, कुबारसी, इधर पे प्लेयर स्प्लिट हो गए। दिस टेस्ट योर सॉलिडिटी इन द डिफेंस एक्चुअली। एंड
वीआर चेक करके बताया है कि ये गोल स्टैंड नहीं करेगा। फेयर एनफ, आई मीन गोलकीपर क्योंकि डिसबैलेंस था। ये wasn't able to पंच करेक्टली क्या होता है भाई? यू इधर स्टैंड इट और डोंट स्टैंड इट। फिर से वैसा ही कुछ मूव आएगा आई गेस। एंड अभी फिलहाल के लिए आई थिंक स्पेन शुड स्लो डाउन द टेम्पो फॉर एटलीस्ट 2 or 3 minutes. Don't hold the ball because this is not that Spain. बैक पासेस चल रही है। स्पेन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। कोबारसी, रॉड्री अभी थर्ड बैक फॉर्म कर रहा है। स्पेन विल नाउ ट्राई टू कीप होल्डिंग द बॉल देयर। अभी जब तक ये थर्ड बैक वाला सिस्टम ये लोग चलाते रहते हैं, कोकोरेया गोइंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू फाइट एलेक्स बायना मे बी बट नॉट। पेड्री के लिए गया। पेड्री विल ट्राई टू फाइंड बायना। बायना का गलत भाई, दो बंदे इधर पे। बायना को पास कर यार। हियर वी गो, 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 हियर वी गो। नहीं यार, नहीं आ रहा है ऐसे तो, गोल नहीं आ रहा है। रॉड्री फॉरवर्ड प्ले। पेड्रो पोरो को प्लास करो। लमीन यमाल के लिए डमी है। आई थिंक इट्स अ डमी अगेन। Oh, goodness. It's getting physical. It's getting too physical. It's getting too physical, honestly. Almost. Where Sabal it is, I guess. Whoa, whoa, whoa. This is now the fifth corner. Where Sabal did try to score. And this is a good reactionary save. Again, Lamine coming for from using his left foot. I think they will try to find Americ Laporte. That should be the move. That was a clean punch and clean game. Claim है भाई. Ah, that bounce, that bounce. Again, going back. Uh, Yamal tried to cheeky. I think this is offside clearly. Let's look at it. Yeah, that run was timed quite early. Again, अभी गेम की पेस फिर से स्लो हो गई है। अभी पता नहीं ये लोग वुड ट्राई टू, क्या बोलूं मैं। चीजें जैसे चल रही है, ये अभी फर्स्ट हाफ नील नील रह सकता है अंटिल स्पेन डिसाइड्स, क्योंकि स्पेन की जो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट 10 मिनट्स में जितनी इंटेंसिटी दिख रही थी, इट हैज क्वाइट शट डाउन। थोड़े वो चीजें ऐसे ट्राई कर रहे थे जो ऑब्वियसली मैंने स्पेन के मैच में स्पेन के टैक्टिक्स में एक्सपेक्ट नहीं किया था।
देखो इनका गोलकीपर कितना चढ़ा चढ़ा आ रहा है। बैक पास अगेन, प्रेस आ रहा है, टू मैन प्रेस, बीटिंग दैट, कुकुरिया, गोइंग फॉर द काउंटर, गोइंग फॉर द काउंटर, बायना इज फ्री, बायना, 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 कुकुरिया इज फ्री, won't get the pass, Lamine Yamal, Yamal, Yamal with two players, that was crazy, but Alaba with the collection, again, Spain, okay, Sabitzer, Kukurea will try and collect the ball, collected, back pass, Rodri will pass it to Olmo maybe, no, Oyarzabal, Dolmo was there, positioned, थोड़ा सा मिस हो गया, ये Olmo is that fox in the box actually, he's a proper false nine. Oyarzabal का उतना गेम दिखा नहीं है. Olmo is, oh, just when I said Oyarzabal दिखा नहीं गेम में, just when I said Oyarzabal hasn't showed up, just when I said, just when I said, just when I said, guys, just when I said Oyarzabal stepping up, and कैसे गोल पड़ा. That was a pass, no offside obviously. Then that was a pass from Kukurea. That was a brilliant assist from Kukurea. ग्रेगोरिच इस बार कुछ नहीं कर पाया. Oh, I guess Alexander Shaga. I mean, if I'm not pronouncing it wrong. Again, इस मूव की ओरिजिनेशन एक्चुअली सब किसने की? It was Rodri. Rodri spotting it. थोड़ा सा स्क्रैपी होता हुआ उधर पे, but then Kukurea. That was brilliant, man. And I don't think Spain will try and defend. Spain will try to score more goals. Sabitzer trying to collect that ball. अभी इस हाफ में कितने देखो, 2-3 मिनट और बचते हुए, and then we have what to say, no minutes of the play, and we have 8 or 9 minutes. Yeah, we have roughly around 10 minutes of football left to play in this half, I guess. 10-2. Yamal फिर से trying that shot, but it was too easy. Okay. लाइमर लाइमर को आज ऐसे धोती खोल के पॉकेट में जो रखा है ना यमाल ने, दैट इज वन फॉर वन ऑफ मैन. आई गेस इसने 3 या 4 बार इसको नटमेग किया है. आई डोंट रिमेम्बर द काउंट, 2 टाइम्स इज डिस्टिंक्टिवली, बट या. ओके, वेरी गो. Dani Olmo, Oyarzabal, Oyarzabal still had the ball but taken away. Cornered Limer, Sabitzer going to the midfield, trying to win it back. Rodri back passes it. Now we have Aymeric Laporte passing it to Rodri. Rodri back to Olmo. Kobarsi. Pedro Porro. Pedro Porro going to Yamal. Yamal with two players, Matt. That is the level you need to defend this 18-year-old. He's just playing the players.
Then we have, oh my God, that was good from Pedri. Korea going here. Baena going for it again. That's a Spain corner. अभी देखो बॉल आस अभी अभी अगर बॉल प्ले करना है जैसे कि फर्स्ट उसमें था शॉर्ट पासेस कर रहे थे एलेक्स बायना बट आई डोंट थिंक सो ही वुड बी डूइंग दैट अगेन सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी इट्स जस्ट गोइंग टू बी again one directed towards Rodri and Emerick Laporte and then there's तुम्हारा एक रन डालने वाले कुकुरेया let's see almost standing there Sabitzer they won't get the breakout man. And अभी ये फिर से बैक पास Rodri trying to build up the play. Rodri again. Rodri looking for options. Oh, trying from distance. No luck, bro. No luck. इतनी इजीली गोल में ही मिल जाता. But हाँ, that was a good try. Trying to find the keeper off guard. Again, going towards. Oh, that was a bad one. That was a bad defensively. That was bad. Rodri. Rodri defensively so solid, man. Rodri looking for options. Rodri looking for options. Going to Kukurea now. Kukurea to Emric Laporte. Laporte to Kubarsi. Kubarsi fighting for options. Kukurea. Baena. Laporte. Pedri. पेड्री का गेम देखना अब ओह माय गॉड व्हेन आई जस्ट सेड पेड्री का गेम देखना अब शायद सबको बदनाम करना पड़ेगा ओह माय गॉड Unai Simon 2 minutes left before in I mean injury time 2 minutes just 2 minutes left before that okay Korea back passes it and then again we have cameraman obviously Yamal Yamal two players on Yamal with no options back to Poro, Poro, Kukurea, Baena, Baena, Kukurea combining very well. Kukurea, Baena, Kukurea, Rodri. Rodri will try to find options. Back passes it. Rodri again. Rodri loses the ball. That was bad from Rodri. Rodri का first खराब touch आया after 44th minute. After 44th minute. ओ माय गॉड वो फॉल्स रन नहीं पड़ा वरना दैट वाज डेडली भाई दैट वाज डेडली
It is a offside. It is an offside. So this is how it goes. This is how it goes, man. This is how it goes. Oh, that was Austria. Limer trying to tear through the defense, but unlucky. One pass to Yamal, maybe. Baena. And I think Conrad Limer has just. That's a free kick for Spain. What? 4 मिनट्स का अभी टाइम मिला है तो 3 more minutes. 3 more minutes. अभी निको विलियम्स को भी आना है. That's a good position to get a free kick actually. But I don't think so this will result in a goal. We have seen quite a few free kicks being scored directly. The one on the ball this time will be Alex Baena, I guess. Olmo will make the run. It will be directed towards Marco Correa. Because देखो headers मारने में ना ये जो mostly है या तो you go direct for it or you try to find a head in the line. Oh, Baena tried to shoot it directly. Oh, Spain. Two chances on there. Yamal with a shot later on the follow-up. Alex Baena. This is a woodwork. This is a woodwork. Guys, this is a woodwork. Just 2 or 3 minutes left in this half. फिर मैं थोड़ा break लूंगा actually. Before Austria actually tries to do something. क्योंकि Austria के touches in this opposition half is just questionable. Kovarsi has taken a fall, being treated. That was just inches from going in. The free kick. Yamal was just lurking. I think that was quite unexpected. I told that there are quite a few free kicks that have been scored directly, and that was just woodwork. And that was good by Lamine Yamal on the follow-up. Didn't expect that, but yeah, there's something on. Probably 1 more minute of game. Is it a drop ball? I don't know what's happening in the ground. There's just too much noise there. There's just too much noise there. ये कैमरामैन को क्या भाई क्या फुर्सत है भाई अपने काम से काम तो रखता नहीं है. Okay. The first half actually ends right now, guys. The first half ends.
Goal from Mikel Oyarzabal in the first half, and that's how it rolls for right now. Let's have a look. Let's have a proper look. Let's have a proper look, guys. So, yeah, I don't know how अभी कैसे see things will stand after this. But yeah, Spain should like be getting one more goal. Spain should look to get at least one more goal. This is how we roll, right? This is how we roll. तो अभी मैं सीन को थोड़ा चेंज करता हूँ. I will have a look. Yeah, there is ये वाला सीन and ये सीन जाता है. अभी देखते हैं किसने क्या कितना अच्छा खेला है, क्योंकि खेला खेलना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओयारzabal obviously with 7.6 रेटिंग, अभी तक हाईएस्ट रेटेड प्लेयर. बट देखो, एज आई वाज सेइंग, द प्लेयर हु बिल्ट इट, जो who has been everywhere. He has 48 touches all over the field. Expected assist is 0.01. None of that matters. एक खराब टच आया था उसका. Other than that, which I noticed, which जो मेरे आंखों को लगा कि यार ये खराब टचेस है. ये यही वाला जो स्टैट है, ग्राउंड डुएल्स वोन, तो ये 3 out of 4 है. could have been better, the touch would have been better. Other than that, अभी क्या ही सीन है. Accurate passes, 93% accurate passes out of 42 passes which he has done. Obviously a 30-year-old Rodri doing it. 30-year-old, 30-year-old, 30-year-old Rodri. Crazy. 18-year-old Lamine Yamal. I mean, I'm just imagining a few things around, but yeah. Baina का जो stat दिखा रहा है is 37 touches. He has been absolutely balling here with your one and only Kokorea, who doesn't look 27 by the way, but is 27. Oh my god. Baina is 24. Oh my god. I don't know. Well, that is just a different thing around. That is just a different thing around. यहाँ पे ग्रेगोरिच का वो खराब एक टच जैसा आ जाता तो लाइमर का पता नहीं भाई. लाइमर हैज बिन दिस इधर पे लाइमर बस वाज डिफेंडिंग. accurate passes 84%, successful dribbles, accurate long balls. Defensively he has been doing four tackles, six recoveries, and double pass 2 times. He has been double pass 2 times. Come on. Ground duels won. I mean, I can't believe that Conrad Limer is the best player. And honestly, he has been their best player because, yeah, Lamine Yamal was just balling out against him. But yeah, again, this guy, Pedro Porro, don't just count him out right now because इसने अपनी explosiveness ने ना बस मिनटों में दिखाई है. इसने अपनी पूरी एक्सप्लोसिवनेस मैच में दिखाई नहीं है. तो वंस आई गेस इफ कॉन्रेड लाइमर की जो वो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप ऑफ करती है, या फिर मार्शल सेविट्जर की वो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप ऑफ करती है, ही माइट वी माइट जस्ट फाइंड हाउ पेड्रो पोरो इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैंने बोला था कि पेड्रो पोरो एंड लमीन यमाल का गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड दिस हाफ. हालांकि जो तुम्हारा ये जो स्टार्ट से देख रहा था कोकोरे एंड बायना का कॉम्बिनेशन हैज बीन गुड एज वेल. पेड्री हैज बीन इनविजिबल थ्रू द गेम, बट मुझे नहीं लगता कि पेड्री को अभी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. अभी आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इफ यू वांट सम मोर एक्सप्लोसिवनेस ऑन योर राइट हैंड विंग, you are welcome to bring in Nico Williams later on in this game around 75 फिफ्थ मिनट, जब लगेगा कि हाँ इंटेंसिटी ना थोड़ी कम हो रही है. अदर देन दैट यू हैव मार्टिन जुबिमेंडी एज वेल, जिसको तुम ऑल्मो के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि
ओल्मो का अभी भी गेम आना बाकी है. ओल्मो हैज बीन अ बिट ऑफ कलर. वो ऐसे चांसेस में जो फॉक्स इन द बॉक्सेस वाले होते हैं वो उस पे बाउंस करना चाहिए. This is how he goals scores the goals. Yeah, mostly. But let's see. I mean, that's how it rolls. So yeah, yeah. थोड़ा पानी पी के आओ maybe before the next half starts. I guess the next half just starts in 5 minutes. Yeah, I'll just be back, guys. All right. We have been back. We have been back. We are so back here. We are so back. अभी गेम चालू होगा क्या? यार जी का yeah. Spain created 11 shots with 6 on target. 11 shots with 6 on target reflected an XG of 1.34, which is being reflected on the score sheet as well. Whereas Austria registered 2 shots while none on target, highlighted by an XG of 0.09. Surprisingly, it's the first time that Spain have led in the first half time. Okay, this has been the first time. ठीक है. I mean, yeah, it's 2002 say 2026-24 years time. Abhi commentary lineups, what we were looking at, factors, yeah. देखो, honestly ये पॉइंट पे they were just कि प्लेन लास्ट लैक्ट ऑफ कि यार अभी छोड़ देते हैं. अभी थोड़ा गेम का मोमेंटम चलो नहीं भी चलेगा because they were not generating any shots and compared to the first quarter they did register like 6 क्या है, they just registered 6 touches in opposition box. Zero shots on targets, zero big chances. There was one big chance missed by uh, Spain actually. But yeah, let's see. I mean, yeah, what was that? This is the goal by Oyarzabal. This is Laporte's 0.919 XG. Oyarzabal, Olmo, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal. See, uska rating, I don't know how it is that bad. It should not be that bad, honestly. Yeah, but yeah, how Spain plays the game is actually quite interesting. Expected goals, open play goals. अभी इसमें ना एक चीज मैं बताता हूँ. अभी एक चीज जो मुझे लगती है, ये स्टैट्स में जाता हूँ. You should have something. Okay, so this is the big chance actually which was missed of 0.14 xg. That was essentially coming up from that corner, which was headed away, and then
Lamine Yamal just got it. Oh no 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 no! It was the free kick, right? Yeah, it was the set piece free kick. तो आजकल ये देखो तुम्हारे ये चीजें भी बहुत फैक्टर कर जाती है एंड या यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना अगला मैच स्ट्रीम नहीं करते हैं मेरी तो धड़कन ना ऐसे रुक जाएगी फॉर दैट मैच एंड व्हाट कैन आई से दिस इज वो स्ट्रीम नहीं करूंगा वो शायद मैं देख लूंगा आई मीन आई कांट सी माई आइडल ऐसे गोइंग अवे यू नो वेल दिस इज हाउ इट रोल्स तो अभी भाई इतना ऐड क्यों दिखाते हैं ये लोग commercialization of the game I don't know or stuff like that अभी यार अगला हाउस चालू करो सोने भी जाना है खाना भी खाना है when your life is falling out भाई स्क्रिप्ट लिखनी है भाई भाई यार 4:30 वाला मैच नहीं देखा जाएगा यार दिस हैज बीन ऑनेस्टली एंड अभी यार देखो मुझे पता नहीं यार आई डोंट नो हाउ आई होल्ड अप बिकॉज दैट इज वन मैच की जहाँ पे रोनाल्डो लूका मोद्रिच and that is one game that I'll be watching but यार देखो this is just honestly अभी 2 घंटे स्ट्रीम कर रहा हूँ दिस has been ever the longest stream I mean whichever मैं गेम्स खेलता था पहले बट ठीक है यार चलता है पता है ये वर्ल्ड कप क्योंकि नहीं आएगा बाद में रोनाल्डोस द मेसीज they won't come this is the last time we will ever watch greatness unfold at this level तो अभी जो है ना अभी हम लोग थोड़ा ट्विटर स्क्रॉल करते हैं देखो स्क्रॉलिंग तो अपनी आदत के अंदर है ये कहाँ से आया भाई ये कह दो ये फुद्दो रैंकिंग है भाई लियोनल मेसी फोर्थ पे है। नहीं यार लियोनल मेसी ऑन द टॉप भाई वो एमएलएस खेल के वो जीत जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड कप असिस्ट फॉर मार्क कोकोरिया द रियल मैड्रिड ब्लड ये क्या है आई प्लेड विथ एम्बाप्पे रोनाल्डो हालैंड कौन है ये ओके played with Mbappe in Monaco probably but yeah मोनाको से कौन से प्लेयर थे हमको याद रहता है let me guess रूबेन डियास गेस करना पड़ेगा रूबेन डियास का ट्रांसफर कब हुआ था रूबेन डियास का ट्रांसफर कब हुआ था रूबेन डियास का ट्रांसफर इज मे बी रूबेन डियास I mean that's the obvious answer maybe Ruben Diaz Ruben Diaz Portuguese football player I mean Ruben Diaz does play for I don't find any other. He played in Benfica. देखो अब मैं मोनाको का अब देखो भाई मैं सीधा प्लेड विथ ऐसा ही टाइप करूंगा प्लेड विथ एम्बापे प्लेड विथ एम्बापे एम्बापे नहीं एम डिक्टेटर एम्बापे रोनाल्डो सिल्वा हो सकता है क्या नहीं वो उसने भी बेनफिका खेला हुआ है मोनाको तो नहीं गया था हालैंड हालैंड प्लेड एम्बापे रोनाल्डो एंड हालैंड फीफा वर्ल्ड कप टॉप अभी ये क्या है
अबे यार नहीं होगा भाई। देखो ये सब चीजें मेरे से नहीं होती है, आई एम वेरी वीक एट दैट। ये फुटबॉल ट्रिविया किसी और से ही करवाओ, एंड इसके कमेंट सेक्शन में भी जाओ ना, तो भाई वो उसका आंसर वो लोग गलत वाले पे रिस्पॉन्ड करते, सही वाले पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो अभी तक वो नहीं देख पाऊंगा। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन गोना हैपन my with your future what's gonna happen with your future after World Cup? Bradley Barcola. Focus on World Cup now. After that, my future. I don't know. Nonchalant. So अभी फिर से गेम चालू होता है। अभी फिर से गेम चालू हो रहा है। So we'll just dive back in. Probably I'm just tired, you know, पता नहीं है अगला स्ट्रीम में कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ऑफिस ऑफिस वगैरह करके नहीं होता है। अगला अब चालू होने वाला। जस्ट लेट्स सी। लेट्स सी। ग्रैब अ कैन। देखो यही है फीफा वर्ल्ड कप देखने का एक असली मजा, कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है, तुम देख पाते हो मैचेस वंस इन अ वाइल, जो तुम्हारे कंट्रीज को इतने भिड़ते हुए। एंड ऐसे ही हम लोग इंडियंस ऐसे ही जाग जाग के फुटबॉल देखते हैं, राइट। अभी ये सीजन खत्म होगा, उसके बाद वी विल बी डूइंग वॉच अलोंग्स ऑफ ला लीगा, यूसीएल एंड ऑल। मे बी प्रीमियर लीग। देखो प्रीमियर लीग तो फिर भी एक फ्रेंडली टाइम पे चलती है। आई मीन प्रीमियर लीग इज वेरी मच फ्रेंडली टू इंडियंस एक्चुअली। वो चालू ही होता है ऐसे अराउंड 6 p.m. IST, एंड देन फॉलो अप 10:30 p.m. मैक्स। ऐसे मैचेस हमको मतलब PL is too supportive of the TV money and stuff like that, so they are just। अभी कौन सब्स्टिट्यूट हो गया है? It's not that significant, I guess. Spain and substituting, I guess. That Spain substitute. Just let me check on the SOFA score actually. So lineups. There's no one substitute क्या? मैंने बोला ही था कोई सब्स्टिट्यूट करने की अभी फिलहाल जरूरत है ही नहीं। अभी दो चेंजेस किए हैं राल्फ रैग्निक ने। Slager को निकाला है एंड निकोलस सी वर्ल्ड को निकाला है, एंड देन चुकवुमेका कार्नी चुकवुमेका एंड फ्लोरियन ग्रिलिश ग्रिलिटिश। ठीक है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता है भाई, ऐसे ही बोल दिया करूंगा, ठीक है। डोंट माइंड मी। बट इन्होंने अपने दो एट्स को चेंज किया है, एंड अभी के लिए अदर देन दैट क्या ही बोल सकते हैं। Jamal rating in sofa score has been actually decent. Kokorea, Kokorea, and oh my god, they are very physical. भाई फिजिकल अब्यूज हो रहा है इधर पे। स्पेन का फिजिकल अब्यूज हो रहा है। नहीं, तुमको वार्निंग दिया जाएगा। कोच ने कहा सुनी कि असिस्टेंट कोच, आई मीन वट एवर इट बी। कुबार्सी, रॉड्री, पोरो, Olmo, फिर going back, Yamal passes it back to Poro, Yamal again, Yamal with बैक पासिंग। यमाल को आज यमाल का गेम खेलने नहीं देंगे ये लोग, दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस। कोकोरिया अगेन, कोकोरिया अगेन गोज बैक। पेड्री, पेड्री अभी तक पूरे गेम में दिखा नहीं था। चुकपुमेका, दैट्स अ क्रेजी एस नेम। भाई साहब, स्पेन के ऊपर फिजिकल असॉल्ट होते हुए।
आई गेस ऑस्ट्रिया को पता चल गया है कि यार देखो, हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं हम लोग। हम लोग को ना अभी थोड़ा सीरियस खेलना पड़ेगा। हम लोग या तो इन पे फिजिकल हो जाते हैं, ठीक है, इन पे फिजिकल चढ़ जाते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग को आता नहीं है गेम खेलना। एंड बाकी तो मतलब चीजें है ही, जैसे एज इट स्टैंड्स राइट नाउ स्पेन इज गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 16, विल ईदर फेस क्रोएशिया या फिर पोर्टुगल। भाई साहब, यमाल को साबित्सर और चुक्वुमेका ने जो भाई, चुक्वुमेका, साबित्सर, Oyarzabal, Oyarzabal with a shot, but that was good. This is so that much, but yeah, I mean, Unai Simon back to Emerick Laporte, Rodri जब भी बॉल पे आया है, he has been good actually. Gone to Rodri again. Rodri passing it back. Kukurea. Kukurea and Baena का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? नहीं, Kukurea chose Olmo to Baena. बायना लूजिंग द बॉल, बायना का गेम अभी शायद नहीं चल रहा है। आई थिंक बायना का सब्स्टिट्यूशन इज shown on the cards. Kokoria passing it to maybe Olmo. Yeah, Olmo. The ball goes for Olmo, but Olmo is unable to. It has gone for a corner. Alex Baena with another Spain corner. Alex Baena again. Oh my god, that was a crazy miss. Where's the ball? Where's the ball? Where's the ball has been a good player in this match. Spain going at it again. Olmo, shimmy, no free kick, advantage होना ही था. Lamine, Olmo, सब ने मिस किया बॉल. Oyarzabal अब on the ball. Baena going for it. Baena doesn't find a man, passes it back to Kokorea, Olmo, sorry, not Olmo, Oyarzabal, looking for Olmo, passes it there. Kokorea finding him free. Olmo, not Olmo, trying to find Baena. That was a clearance. Baena just there.
पेड्री पेड्री अब थोड़ा दिख रहा है एट दिस गेम. ओके. Kokorea again going for it. Mind you, we have just 15 more minutes of playtime because इसके बाद Rodri is going for it. Oh, that was menacingly close by Rodri. Rodri, whenever he has been on the ball, has been great for me today. That deflection actually caused it. That deflection actually was. Rodri का game actually has been too great, too great. Rodri was great today. Baena का फिर से एक और corner. I think Baena is loving it in the corners. Yamal on it. Yamal trying to cut inside but losing the ball. Passes his back to Unai Simon. Unai Simon is trying to find a man. Rodri it is. देखो, Rodri is everywhere on the pitch right now. यमाल यमाल जस्ट फॉलिंग ऑफ. यमाल का गेम जितना जा रहा है उतना खराब जाता हुआ है. जितना गेम ये लंबा खिंचता हुआ यमाल का गेम उतना गंदा दिखता हुआ. Rodri yet again. No, this is not Rodri. That was Petri. Pet. Oh my God! Now I think a card is just to come out. I don't know. Is it a warning? Alex Baena I think will get substituted because Baena को actually ये own करते हुए. Rio Ferdinand stands in the stands. Back passes. अभी substitutes हुए क्या? अभी substitutes हुए हैं क्या? अभी no, there hasn't been any substitution as of yet. Kukurea has too much space but no man in there. ये है तुम्हारे पास है स्पेन के लिए एक प्रॉब्लम जो उनके पास एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है ना. पोरो पोरो गोइंग फॉर इट. पोरो का जो क्रॉस है वो प्रॉपरली आ नहीं पाया. Rodri again tracking back. Sabitzer, Amit Laporte, Unai Simon, easy collection. Rodri again with Pedri, combining with Pedri. Pedri looking for options, looking for Dani Olmo. Dani Olmo on the ball. Yamal will try to just run it. No, there are two players tracking Yamal. Pedro Porro. Pedro Porro backing to Rodri. Rodri to Pedri. Pedri will pass it to Kukurea maybe. Kukurea nahi. Baena back to nahi. This was a bad pass but yeah ठीक है. Baena, that was a bad ball by Baena in easy recovery. Kubarsi alone as a last man. Now Kukurea has been playing beautiful actually. I think Kukurea and Baena have switched their roles right now and that is working. That is looking just great because left hand side में
जब भी you have Yamal on the ball, there are just two men marking there. Yamal, now free, doesn't have a man. Can he show? No, that was a corner. Conrad Limer has a good game right now, I would say. Because after that few nutmegs, he has been defensively solid. Oh, I think that was a goal kick, essentially. Never mind. I mean, yeah. The only way to find a goal for Austria right now is find a defensive vulnerability and to cut Rodri out of the game because he has been so good right now defensively, offensively. That's an offside. Okay, the another change for Austria. Two more changes actually, in fact. Arnautovic, the Austrian legend. I think this guy is also the last World Cup. Nobody talks about this, but Arnautovic is also a very good goal scorer. He has always been. मैं जब फीफा में खेलते था या फिर ड्रीम लीग सॉकर खेलता था, this guy used to be in my team. I mean, at least in the initial phases. Oh, have the respect for this guy actually. He plays good football. He plays brilliant football, in fact. And then passes to Sabitzer. Sabitzer trying to. Whoa! That would have been a first touch goal. That would have been a first touch goal. That would have been a first touch goal. Gang, that would have been a first touch goal. I mean, मुझे पता नहीं. Okay. Spain has been वो Spain गेगन pressing दिख रहा है इधर पे. But you have left Lamine Yamal on the wings, man. अब उसको एक man मिलेगा. Danny Olmo, is he there? He isn't. Danny Olmo. Oh, ऐसे moments के लिए you need Danny Olmo already in the box. If he would have been a few seconds earlier, that could have been a goal. But that is the only way you can find Lamine Yamal inside the game because Conrad Limer has been defending him brilliantly. Now again, Limer, assistant referee has said goal kick, or was it an offside? It's close. It's close. I don't think it wasn't Yamal's offside. It was Danny Olmo who was offside. But yeah, it was close. थोड़ी बहुत एरर्स चलती है बट या chill chill. Sabitzer साबिर का वो बहुत अच्छा बेहतरीन पास था एंड सिमोन क्लियरिंग इट बट ये ऑब्वियसली दिस वाज अ क्लियर ऑफसाइड बट अभी आर्नोटोविच को थोड़ा सा लगा है because of the way in which Unai Simon and now I don't think so watching Simon play watching how he plays I don't think so कि this would have been the dedication kind of you could expect from David Raya, probably from John Garcia, maybe a mature John Garcia. 4 years from now, I see the agar Simon couldn't hold up to the game that he plays right now.
is coming into the squad. Probably not David Raya. David Raya, you could have been born for any other team, any other nationality. You would have started it, undoubtedly. No offense, but you know, John Garcia is just starting in the next World Cup. Man, I mean, this has been again one of those star statue moments for, but yeah, whatever it is, never counting out because yeah, Simon had a brilliant game in the last few minutes. I mean, coming off ball control. I think a few too many corners may be dangerous for Spain. स्पेन के लिए कॉर्नर्स बहुत डेंजरस होने वाले हैं. अगर ये कॉर्नर्स आ जाए ना, you have players, David Alaba, Arnautovic himself being aerially dominated. तो आई थिंक ऑस्ट्रिया शुड ट्राई कि उनके फाइनल थर्ड्स में बॉल जितना कैरी कर सके, दे शुड ट्राई टू कैरी इट, ट्राई टू विन कॉर्नर्स if they at all want to equalize, or else your congratulations, Spain can just hold on to this 1-0 and try to win. That is what they have been grinding out. And De La Fuente team won't mind it because this is knockouts. You don't mind, you don't want to have a shitload of goals in these matches. तुमको बस देखना है कि यू आर सीइंग द गेम आउट. तुमको कंफर्टेबली मैच जीतना है. तुम अपना बॉल कंट्रोल करके रखो. यमाल ऑन द बॉल, नो ऑप्शंस. यमाल के पास ऑप्शंस नहीं होते ना. यमाल बौखला जाता है. यमाल खुद कैरी करना नहीं चाहता है बिकॉज उसके सामने दो प्लेयर्स आ जाते हैं. Like obviously he would be marked. Dani Olmo on the ball. Kukurea. Whenever Kukurea is in the ball, I feel very comfortable for Spain actually. Baena will lose the ball probably, but Dani Olmo passes it back to Pedri. Pedri का हिसाब थोड़ा अच्छा गया है. Pedro Porro, Lamine Yamal, Pedro Porro, obviously Pedri, Rodri, Dani Olmo, Olmo to Baena, Olmo, free था. Kukurea, Baena, headed. That was a fox in the box. That was Pedro Porro. That was Pedro Porro, my man. That was Pedro Porro. That was a great one. That is a great one. That is how you salvage your game, Alex Baena. That was a brilliant ball. That was a brilliant ball. That was a brilliant ball. एंड नाउ बट वी वोंट काउंट आउट बिकॉज हमने कल भी देखा है बेल्जियम ने कैसे कम बैक किया था. बट आई डोंट थिंक सो. बट या, again I told you, because they play Greek pressing, I don't see them carrying the ball much further into their half. एंड प्रोबेबली हमने फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस में देखा ही था. अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा. अभी पहले इस प्ले को देखते हैं. कुकुरिया passes it back to Baena, then goes for Oyarzabal. No, Pedro Porro. He had just perfectly timed the run. Baena actually salvaged his game actually right now because Baena का second half तो थोड़ा रफ जा रहा था. I would have in moments games जब again ये फेस का जब मैं थोड़ा बैक देखूंगा, that was a brilliant ball by Rodri. Rodri going it. अरे ठीक है. अभी प्ले स्टॉप हुआ आफ्टर द सेकंड गोल एंड इट्स टाइम फॉर हाइड्रेशन ब्रेक. एंड मैं इस हाइड्रेशन ब्रेक में एक्चुअली, डिड दे कॉल फॉर हाइड्रेशन ब्रेक? They didn't call for hydration break, did they? It should be hydration break right now. Yeah, they have called for hydration break. तो मैं इस hydration break में एक्चुअली दिखाता हूँ what have Spain done in this play. तो अभी हम लोग जाते हैं
देखो यही क्वाइट प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि हाइड्रेशन ब्रेक्स तो होंगे अभी। ठीक है, लेट्स गो टू, आई थिंक कमेंट्री पे दिखाता है ये। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, ओके दिस इज हिज फर्स्ट इंटरनेशनल गोल। क्रेजी। तो इसका प्ले दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है, आई डोंट नो। इसका प्ले शायद नहीं दिखाता है। हेड टू हेड लाइनअप्स, हेड टू हेड लाइनअप्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आई गेस, या इज इट द सेकंड गोल? इसका क्या रिप्ले दिखाते हैं ये लोग, आई डोंट नो। इसका मैप में तो दिखाते हैं, देखो। इसका मैं शायद बाद में बोलूँ इसको, बट या द थिंग इज दैट अगर आपने प्ले अच्छे से देखा होगा तो एसेंशियली ये क्या है, हेड टू हेड थ्री, ऑस्ट्रिया वन, ओके, एट स्पेन, दिस कंपटीशन हेड टू हेड, दिस कंपटीशन हेड टू हेड में ये तो दिखाता नहीं, होम, दिस कंपटीशन हेड टू हेड, लाइनअप, स्टैटिस्टिक्स, गोल। अभी 70 मिनट पे गेम चालू होगा तो एसेंशियली व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट लाइनअप्स। सो देखो, बायना ने अपना गेम सैल्वेज कर लिया। बायना जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे पता नहीं फुट मॉब में वो कितना रेटिंग का दिखा रहा होगा। लेट्स जस्ट, ये दिस इज आई थिंक इधर से गेम दिखाता है आई गेस। लेट्स जस्ट सी, इधर से प्ले दिखाता है आई गेस। दिस आर द शॉट्स। ओके, करंटली बायना को सब्स्टिट्यूट आउट किया गया है, एंड देन कम्स मिकेल मेरिनो in place of Danny Olmo। देखो मिकेल मेरिनो इज अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ डैनी ऑल्मो। अब मुझे पता नहीं फेरान टोरेस माइट, बिकॉज देखो बायना ने ऑलरेडी एक वुडवर्क हिट किया है, फेरान टोरेस का कम कर चुका है, तो आई डोंट थिंक सो ही वाज नीडेड। बट या इधर पे फुट मॉब में ही हैज गॉट द रेटिंग राइट नाउ, क्योंकि बिफोर आई वाज शोइंग कि फुट मॉब में इसका रेटिंग जो था, वेट दैट्स स्विच, ओ मैं बता रहा था बिना इसको वो करे। एसेंशियली मैं ये बोल रहा था कि बायना का गेम हैज इम्प्रूव राइट नाउ, बट या। तो अभी हम लोग जाते हैं बैक इन द गेम, बिकॉज अभी 70 मिनट का गेम चल रहा है, 20 मिनट हम लोग देख लेंगे, उसके बाद सोने जाऊंगा मैं एसेंशियली, क्योंकि देखो कोई ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ देखने लायक तो है नहीं। ठीक है, लोग सीन में जाते हैं, मैं बाद में वो बताता हूँ गोल का बिल्डअप कैसे हुआ था। बट एसेंशियली गोल का बिल्डअप इज लाइक, गोल का बिल्डअप वाज एसेंशियली कि ब्रॉडरी ने पास किया टुवर्ड्स कुबारसी, कुकोरिया, कुकोरिया टुवर्ड्स ऑल्मो, ऑल्मो गोइंग टुवर्ड्स अगेंस्ट बायना, बायना पासिंग बैक टू कुकोरिया, कुकोरिया एंड बायना कंबाइनिंग वेल, एंड फिर उसके बाद बायना जस्ट स्पॉट्स एक फॉल्स रन बाय पेड्रो पोरो। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो एवरीवन वाज सो फोकस्ड ऑन बायना, एंड उन्होंने सोचा था कि लमीन यमाल पे फोकस करते हैं, उस चक्कर में वो खाली रह गया। फेरान टोरेस ने बॉल लूज किया, आई डोंट थिंक सो कि बायना और कुकुरिया जैसे कंबाइन कर रहे थे, दे कांट। मैच मोमेंटम तो क्लियरली इन फेवर ऑफ देम। Austria could have scored at least one goal if I check the, you know, stats. No, okay.
Their XG is still 0.37 and Spain's XG is 1.99, which is equal. Like they have scored two goals. And यही चीज है. तो अभी what they have done again, whenever Rodri is on the ball, it's very comfortable. But again, a bad touch maybe from Rodri. No, Rodri has been great in this game. उसके फुटमॉप वाले रेटिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. Anyways, Rodri without scoring a goal has been fantastic. Without scoring a goal, without scoring, giving an assist, he has been just brilliant. I think each of the chances that they have got through Kokori and Baena have been through plays which were dictated by Rodri. कुकोरिया विथ अ ब्रिलियंट वन. देखो तुमको इतना सेल्फलेस बनना पड़ता है. अभी तक ये मैच में कार्ड्स नहीं निकले हैं. एंड मैं जब भी बोलता हूँ कार्ड्स नहीं निकलेंगे, अभी गुत्थम गुत्थी चालू हो गई है भाई बिटवीन स्पेन एंड ऑस्ट्रिया. ये चाहते हैं कि भाई किसी बॉलर के एंड एंड रेफरी बहुत शांति से देखते हुए किसको कार्ड वितरण करना है. अब किसको कार्ड वितरण करना है. अब किसको कार्ड वितरण करना है. रॉड्री को कॉल किया है, ग्रिलिश को कॉल किया है, एंड अभी जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, इनको कुछ वार्निंग देंगे या फिर कार्ड निकलेगा. पेडरी है उधर पे, ओयारज़ाबाल है. भाई कार्ड नहीं निकाला है भाई साहब. इतना गुत्थम गुत्थी के बाद भाई बंदा बहुत शांत है. बंदा हंस रहा है भाई. इसके एवरेज हर मैच में हमने देखा है. मैंने मैंने मैच के स्टार्टिंग में देखा, इट वाज लाइक 3 येलो कार्ड्स पर मैच. बट इतना गुत्थम गुत्थी जो बीच में हो गया था अराउंड 74th मिनट 75th मिनट, आई थॉट कि यार कार्ड्स तो अब निकलनी ही है. जस्ट व्हेन आई सेड कि कार्ड्स नहीं निकले मैच में. एनीवेज एनीवेज अभी ये लोग कॉर्नर्स नहीं निकाल पा रहे यार. यू नीड टू हैव टेकन कॉर्नर्स. यू नो, Austria, you could have went all in there, gotten a few corners around, tried to challenge them, and yeah, 7 subscribers, 8 subscribers, 9 subscribers. Maybe I get a 10 subscriber. Where is the ball? Lamine Yamal, nahi. Ferran Torres, always losing the ball or hitting the woodwork. Kevin Danso, again a corner, but इस बार कौन लेगा? Because Alex Baena is hit out. I mean, oh yeah, like obviously, Spain would try कि यार एक और चला है. But Spain have been deadbeat on. I mean, Spain haven't been convincing on the corners. दे देखो हर सेट पीस पे ना टीम्स की एक्चुअली ओके. लमीन यमाल विल टेक वन फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट. आफ्टर दिस प्ले मैं बताऊंगा क्या चीज है. हाँ, यही एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल राइट नाउ इज, देखो स्पेन हैवंट फॉलोड अ सेट पीस रूटीन हियर. अब मुझे पता नहीं, बट दिस सीजन
जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कप कप गेम्स में मतलब नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स में जीता है, दे हैव एसेंशियली सेट समथिंग अपार्ट विद देयर सेट पीस रूटीन्स। उनके कॉर्नर्स में, उनके डिफेंस में वो लोग फ्री किक कैसे लेते हैं, टीम्स हैव प्रैक्टिस। And apart from that free kick from Alex Baena, which hit the woodwork, nothing has been convincing from Spain because they have got around what, five, six corners. They couldn't find their man in any one of them. They couldn't find man in any one of them. Is that concerning? Well, तुम्हारे अगले राउंड में या तो यू आर फेसिंग जोस्को गार्डियोल की क्रोएशिया वाली डिफेंस, या फिर यू आर फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस वेयर रेनातो वेगा, रुमेन डियास ऐसे वाले प्लेयर्स रहेंगे। तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट देम? तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि सेट पीसेस मिलेंगे, पक्का से मिलेंगे तुमको, कॉर्नर्स मिलेंगे एंड यू नीड टू काउंट ऑन देम। वो दैट वाज अ गुड प्ले फ्रॉम ऑस्ट्रिया, बट a quick few passes from, देखो ऑस्ट्रिया ना थोड़ी कंसिस्टेंट होती इन सर्कुलेटिंग द बॉल अराउंड द सेंट्रल चैनल्स। एंड जो मैं कह रहा था अबाउट द कॉर्नर्स, आई थिंक दिस इज, नो, दे डिडंट गेट अ कॉर्नर येट। देखो हम लोग कहते हैं कॉर्नर्स एफसी आर्सेनल एंड स्टफ, बट द फैक्ट इज दैट, ओके, फर्स्ट लेट दिस प्लीज स्टॉप, ठीक है। पेड्री going towards Ferran Torres, Ferran Torres, Ferran Torres trying to find Pedri, Pedri going towards Rodri, Rodri going to back pass, Pedri loses the ball, not quite, goes to Rodri, Rodri to Pedri, Pedri finding players, going to Rodri again, Rodri going to Cucurella, Cucurella being pressed on, Laporte, Rodri, ट्राइंगल्स में गेम चलते हुए, Laporte going to, okay, this is going to be a lit. Okay, अब प्ले बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, कुकुरिया अटैकिंगली, ओ यार जबाल, ओ Ferran Torres. I think that was a good through ball, but Ferran Torres just was bad at passing to Pedri. Well, that is what it is, and I mean that is what it is. ऑस्ट्रिया मोमेंट्स पे दिखी है इस मैच में, इट्स जस्ट 81st 82nd मिनट, ऑस्ट्रिया मोमेंट्स पे दिखी है, आई वोंट लाई, बट थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, मे बी ट्राई टू गेट अ फ्यू मोर कॉर्नर्स, मे बी ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दो सिचुएशंस जहां पे स्पेन को अनकंफर्टेबल कर सकते थे। इट्स ओवर फॉर ऑस्ट्रिया एंड प्रोबेबली ओवर फॉर नेक्स्ट फ्यू अदर जनरेशंस फॉर ऑस्ट्रिया। टोरेस, टोरेस ऑलवेज लूजिंग द बॉल। देखो बायना एक चीज जो कर रहा था, बायना वाज लूजिंग बॉल, but he wasn't losing on those situations. He had great control over the ball. So this is not that good for Ferran Torres' key outing. Where Zabal has been good in ball controlling as well. अब फेरन टोरेस को तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फेरन टोरेस का मैंने गेम देखा है, फेरन टोरेस के लिए तुम बॉल बनाओ यार, उसके लिए बॉल बनाओ, उसके लिए बॉल बनाओ एंड ही विल डिलीवर यू, लाइक वो उसके लिए इजियर गोल्स नहीं, उसके लिए डिफिकल्ट गोल बनाओ, ही विल गिव यू रिजल्ट्स।
येलो कार्ड, फर्स्ट कार्ड 83rd मिनट पे आया, 83rd मिनट पे फर्स्ट येलो कार्ड। एंड चलो, ये स्पेन को तो हैम्पर नहीं करेगा प्रोबेबली, बट आई वुड से कि कोकोरिया, यू हैड अ ब्रिलियंट गेम, प्लीज बी सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि भाई बायना एंड मतलब ऐसे अगर लमीन यमाल को तुम चैक करके रखोगे तो अगेन यू नीड बायना कोकोरिया पेयरिंग। अगेन पासिंग इट टू यमाल, यमाल के लिए फिर से वही दो बंदे आएंगे, सबित्जर और लाइमर। भाई I mean Laporte will pass to Kokorea. Again back to goes to Pedri. Pedri will try and find Rodri maybe. Pedri keeping the ball, keeping the ball. Back passes it to Rodri. Goes to Kokorea. Kokorea. Ferran Torres. Pedri. Ferran Torres. Ferran Torres. Back passes it to Kobarsi. Kobarsi goes to goes to who? Rodri has a brilliant game right now. Ferran Torres. That was a nice pass. Going for. Oh, that was a brilliant on the line block. Alaba shouting it. Alaba shouting it. Alaba shouting on it. Bhai, but Kumhara, bhai, you couldn't have done better. Yamal being substituted, I guess. Yeah. Yamal had a game but was not being able to show it for because Yamal was being guarded by two players, was being marked by लाइमर एंड सबिट्जर। आफ्टर मैच हम लोग देखेंगे कि लाइमर एंड सबिट्जर का कैसे मतलब हाउ डिड दे फेयर इन द होल गेम। आई टोल्ड दैट these these two guys will be the one to watch out for in, although Sabitzer ka after the hydration break hasn't been such a great display. Chukwuemeka should have been earlier should have been starting the game maybe. I think that is a crazy take for me because Chukwuemeka के आने के बाद that right wing has opened up for Austria. I don't know how it has been going. Okay, the goalkeeper press is on, and yeah, Posh Paras Posh Posh लगा देगा। Jamal, I think, would be sad with the type of game he was forced to have. He would try to. This should not be a penalty. Please, no. Goes to it. Kokorea. Kokorea goes for it. कोकोरिया का डिफेंसिव गेम दिखता हुआ, but that was a crazy ass pass. Again, अब थोड़ा Sabitzer दिखता हुआ, Limer Sabitzer combining. Limer Sabitzer has been equally great as Baena and वो combining. The thing is that कि I think Limer and Sabitzer का game has been more defensively solid, while Baena and Kukurea ka game has been offensively solid, and defensively Kukurea is ate up the wing.
क्योंकि उसके साइड में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं अंटिल चुकोमेका गेम थी। एंड इतना डीप आई थिंक कोकोरिया का होल मैच में मैंने रन करते हुए देखा ही नहीं। तो आई डोंट रिमेम्बर कोकोरिया रनिंग दैट डीप इनसाइड। सो या अगेन I think Spain will now try to keep the whole game in the check. Kukuria now on the attacking front. Kukuria, a brilliant ball. Kukuria has a brilliant game. Oyarzabal with the second. Oyarzabal with the second man. And Spain's overall third. That was a brilliant game. That was a brilliant game. That was a brilliant game. Guys, that was just a brilliant game. Oyarzabal, brilliant man. Man of the match performance में भी ओयाrzabal. Yeah, and this is I think the first ever one जिससे रॉड्री का बिल्डअप नहीं आया था. Amenic Laporte was the key here, and Kukurea का brilliant game. Kukurea was involved in every single one of those goals. Every single one of those goals. Even the one in which Alex Baena gave the assist. You know what? You know what? Kukurea has been brilliant over the match. Kukuria didn't get much appreciation. Kukuria just deserves an appreciation. Kukuria का brilliant match था. Kukuria and you know what? Rodri. They had a brilliant match. देखो, obviously, if you're playing a false nine like Oyarzabal, जो तुम proper striker हो भी नहीं, and yet तुमको 2 goal score करते हो, that speaks volume, you know. But again, putting those chances, brilliant game. I think easily Oyarzabal will be the man of the match. Oyarzabal with some fascinating game today. He had a really good game. Oyarzabal already has 4 goals, I guess, if I'm not wrong, because he has 2 goals against Saudi and 2 goals against Austria. He has 4 goals, and that has been a brilliant run, actually, if you ask me. अभी थोड़े गुत्थम गुत्थी चलती हुई 6 मिनट का एडेड टाइम एडेड हुआ है एंड 6 मिनट का टाइम ऐड हुआ है। आई मीन ठीक है। 6 महीने में 3 गोल तो इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड not that easy. I mean, not that easy. Not at all. Not easy at all. Austria have been there in moments. Goodbye, Austria. You played well. Maybe Chukwuemeka को थोड़ा जल्दी लाते. Maybe you know what? It could have been limited to 1-1 because तुम्हारा ना राइट विंग से प्रेशर नहीं आ रहा था जिसकी वजह से एलेक्स वायना एंड कोकोरिया इतनी ओपनली खेल पाए हैं एंड द phases where Kokorea actually played is the phases where they scored the goals. Even after Chukwuemeka का substitution, there was a time वो जो लास्ट वाला गोल पड़ा, the third वाला गोल था. See again, now because Chukwuemeka is there, Kukurea is not that free. He is stuck in that right back वाला position क्योंकि वो उतना freely घूम नहीं पा रहा है. अब ये अलग बात है कि यार यू आर इन दैट 3 गोल वाला लीड, अब तुम नहीं चाहोगे कि अपना लीड लूज करो. I mean, obviously, still not losing the composure. You just want to see of the game. तुम्हें पता है कि 3 गोल वाला लीड is not is not just something that one wants to take on. I mean, कैसे ही कोई तोड़ सकता है एंड अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके टाइम किलिंग हो रही है विच इज ऑब्वियसली अभी किसको मार्क प्यूविल को मौका मिलता हुआ एंड रुइस को फाबियन रुइस. भाई इतने सब्स्टिट्यूशंस हुए. मार्टिन जुबिमेंडी he has been such a baller for Arsenal this season and yet
and yet he doesn't make it to the team. चलो डेविड राय का तो पता भी चलता है डेविड राय you aren't getting because you know this man Unai Simon he has been great in the past few years for Spain. So you aren't getting any chance because he has the manager's trust. But whatever be it, Abhi Rodri has been brilliant, man. Rodri has been brilliant. Rodri has been brilliant. I mean, again, Kukurea with a brilliant one. Once that right wing opened up, Kukurea has been just defending there. And only in phases there has been time where Kukurea just went there in the attacking half. And now you see कि इधर पे प्रेशर बनता हुआ on Spain. Maybe they could have introduced it earlier. ये राइट हाफ से राल्फ रैगनिक ने जो गेगन प्रेसिंग वाली बॉल खिलाई है, that wasn't very visible. And फिर से Oyarzabal on the run. नहीं, this is Ferran Torres. Okay, that was just I guess एक वो he was just trying to find a run of Oyarzabal. Maybe Oyarzabal could have scored a hat trick. Or yeah, अभी Conrad Laimer, David Alaba, प्रेस ऑन है डेविड एल्बा अर्नाटोविच दिस इज लास्ट वर्ल्ड कप पर्सनली मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता होगा अर्नाटोविच के बारे में बट आई हैव बीन यूजिंग दैट प्लेयर इन माय फीफा एंड ड्रीम लीग सॉकर कार्ड्स तो आई हैव सम इमोशनल अटैचमेंट टू दिस गाय इमेजिन द नेक्स्ट मैच क्रोएशिया एंड पोर्टुगल बट या मैं थोड़ा टायर्ड दिख रहा हूँगा मुझे आज ऑफिस करना पड़ा आई हैव टू गो सम प्लेस एंड देन आई हैव टू I don't know. There is a number of stuffs that's been going on. Yeah, let's see. अभी फाइनल मिनट्स चल रहे हैं उनाई सिमोन जस्ट पासिंग द बॉल बैक अभी एक क्लियरेंस आएगा डजंट मैटर अभी स्पेनिश टीम पूरी अपने हाफ में घुसी हुई है ऑस्ट्रिया जस्ट ट्राइंग कि यार एक गोल आ जाए we just leave some mark on the World Cup because this Spain team has been keeping the clean sheet the whole time but final whistle and just one yellow card in this game उतना गुत्थम गुत्ती होने के बाद भी and Spain into the round of 16 will face either Croatia or Portugal which will be decided in the very next match जो अपने 2 घंटे में है आई एम नॉट श्योर कि मैं इस मैच को स्ट्रीम कर पाऊंगा कि नहीं बिकॉज मुझे आ रही है बहुत नींद अगर मैं 1 घंटे में उठ गया तो I'll just stream that match if not if not guys if not guys I'll just say कि गुड नाइट कल मिलते हैं अर्जेंटीना वाले स्ट्रीम में ऑब्वियसली मैं आऊंगा दिस हैज बीन अ ब्रिलियंट गेम दिस हैज बीन अ ब्रिलियंट गेम बाय स्पेन especially to players like you know what there have been players like Alex Baena कुकोरिया रॉड्री लमीन यमाल का ऑफ डे जैसे लग रहा है बट यार डोंट डोंट काउंट हिम आउट देखो फिर भी बंदे ने 7.8 की रेटिंग दी है फुटमॉप में एंड ऑब्वियसली दिस बीइंग वन ऑफ द लोएस्ट एक्सेप्ट फॉर पेड्री एंड ओल्मो पेड्री का गेम दिखा सेकंड हाफ में आई थिंक फर्स्ट हाफ में उसका उतना गेम दिखा नहीं है अटैक में ही हैज सक्सेसफुल dribbles he doesn't have that much but defensively banda has been solid duels won aerial duels won
एंड दिस इज व्हाट यू वांट, 89 टचेस लेफ्ट हैंड साइड में इसका बंदे का गेम दिख रहा था इन द सेकंड हाफ. So yeah, Oyarzabal being the man of the match performance with the two goals. Oyarzabal has have had 43 touches, two of them being the goal and a few of them being shots on targets. See, this is how you actually make your game. Olmo, on the other hand, had 40 touches, जिसमें काफी goals आ सकते थे. Few of them he missed on. And other than that, देखो, highest rated, obviously Kukuryaka had a brilliant game, two assists. And even I would count this Baena वाला कि यार ये गेम जो आ रहा था would be passing on from Rodri to Kukurea to Baena then passes it to where's the ball. That has been brilliant, man. So Kukurea has been clearly the man of the match in terms of creating action, but so has been Mikel where's the ball. So because he's playing a striker role in a team फिर स्ट्राइकर की भाई कोई जगह ही नहीं है. तुम अटैकर में किसको खिला सकते हो भाई? तुम अटैकर में विक्टर मुनियोज अभी तक आया नहीं है. ठीक है, विक्टर मुनियोज इज अ बॉलर recently signed for Liverpool. Victor Munoz is a good player. So अभी जो सीन है इसका, तो फिर अभी अभी हम लोग फुटमॉब में एक बार जाते हैं. हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, नॉकआउट्स का क्या सीन बन रहा है देखते हैं. अभी देखो यूएसए बेल्जियम तो डिसाइडेड है, कनाडा मोरक्को डिसाइडेड है. अ, अभी आज के जो मैचेस होंगे उसमें से पोर्टुगल और क्रोएशिया का होगा. अभी मैच जस्ट नेक्स्ट 2 घंटे में. मे बी आई वोंट बी able to stream the match, but yeah, let's see. um अभी I won't be concentrating on subscribers for now because देखो essentially मुझे बस बॉल नॉलेज गेन करना है एंड मजे काटने हैं बिकॉज आई लव वॉचिंग फुटबॉल. मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई वुड डू दिस जॉब इवन विद जीरो सब्सक्राइबर्स, इवन विद जीरो एनीथिंग, बिकॉज ये मेरा इंटरेस्ट है. एंड देन अगेन वी हैव अगला गेम लेटर ऑन टुडे एट नाइट. Later on today we have Austria and Egypt. Then we have okay. After this game, maybe we have Switzerland and Algeria. I don't remember the order, but ये दोनों matches आज होंगे and उसके बाद Argentina and Cape Verde, which I'll obviously be watching along. Then we have Colombia and Ghana. Colombia and Ghana. I think Colombia will go from here. Switzerland from here. अर्जेंटीना. देखो अर्जेंटीना और काबू वर्दे का मैच जो होगा ना, काबू वर्दे विल पार्क द बस. ठीक है, बिकॉज देखो काबू वर्दे का जो एक गेम आया था द ड्रॉ अगेंस्ट उरुग्वे, आई डोंट थिंक सो दे हैव जस्ट बीन लॉक्ड आउट मैक्स because of those two goals. And because the very next game against your which team, the third place team, what was it again? उनके ग्रुप में उनके ग्रुप में don't remember the name, but yeah, I guess it was Saudi. Yeah, it was Saudi. Yeah, because Uruguay came last. Saudi के अगेंस्ट जो गेम था वो अगेन वाज अ nil-nil ड्रॉ. सो अगेन हम लोग एक बार चेक करते हैं स्पेन had a brilliant game. एंड देखो मोमेंटम चार्ट में क्लियरली दिखता हुआ. एंड देखो एक्सजी जब हमने चेक किया था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन वो बढ़ा नहीं है. Big chances, four big chances, one big chance missed, and out of those, apart from that one mixed by Lamine Yamal, the three have been scored. Okay, okay. Yellow card, एक yellow card निकला. I guess the referee was good. The referee was actually good. Mikel Oyarzabal with the last goal. इसमें 0.58 xg था. Obviously, this should have been scored, and he did score. Ferran always missing. लमीन यमाल का ये वाला जो फर्स्ट मिनट में आया था
एंड यार सवाल लमीन यमाल का ये वाला and that was 0.20 xg, and this was the save from you know Alaba. Alaba का पोजीशनिंग अच्छा था, ओपन प्ले एक्सजी इनका ज्यादा अच्छा था, सेट पीस देखो, सेट पीस पे you have 0.77 xg का, बिकॉज यू नो स्पेन का ये कंसर्निंग पार्ट मुझे लगा है, दे हैव गॉट हाउ मेनी कॉर्नर्स, ठीक है कॉर्नर्स देखना गाइस, 9 कॉर्नर्स, from 9 corners you couldn't find any one of your teammates, ठीक है, 9 corners से एटलीस्ट आई वुड काउंट कि एटलीस्ट तुम्हारे 2 कॉर्नर्स काउंट होने चाहिए थे जो तुम्हारे टीममेट्स को कनेक्ट होते थे, ठीक है, आई नो दे ये टीम में यू डोंट हैव मच ऑफ द हेडिंग वाले प्लेयर्स, रॉड्री है, एमरिक लपोर्ट है, एंड देन वी हैव समवन लाइक डैनी ओल्मो, ठीक है, डैनी ओल्मो का इस गेम में क्या था कि ही वाज बेसिकली फाइंडिंग दोज रन्स कि कहाँ पे बॉल फॉल करेगी, कॉर्नर्स में मैं क्या करूंगा ना, पीछे रहूंगा, आई विल बी डिफेंसिवली सॉलिड बिकॉज द अदर डिफेंसिव गाइज आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर द हेडिंग, तो मैं क्या करूंगा, बॉल जब रिबाउंड पे आएगा आई विल जस्ट ट्राई एंड अटैक दोज बॉल्स, so that was Danny Olmo ka game, but yeah, I don't blame him because, and then again, I think Rodri had a brilliant game. Rodri had a brilliant game. Rodri का हम लोग हीट मैप देखते ही was all over the pitch. ये हमने जब फर्स्ट हाफ छोड़ा था, it was just around the four corners. He extended his game to the right flank, and the right flank today, I mean the left flank today, was owned by these three guys: Rodri, Kukurea, and I mean, I don't know how many times I've spoken Rodri Kokoria and Baina, Rodri Kokoria Baina, Rodri Kokoria Baina. Rodri's actual position here shows here, but Rodri का I guess अगर हम लोग actual position देखें तो कहीं have been ओके, पेड्रो पोरो का एक गोल जो है उसकी वजह से इसका थोड़ा रेटिंग अच्छा दिखा रहा है, देन वी हैव मिकेल ओयारज़ाबाल and the man of the match 8.2 8.2 8.4, पेट्रोपोरो का उतना अच्छा गेम तो नहीं था, रॉड्री का इन्होंने, भाई ये रॉड्री का गेम देख ही नहीं पाते आई गेस, एंड हाँ, मेन हमको जो देखना था दैट वाज कॉनरेड लाइमर का इधर पे, जो पता नहीं ये लोग कैसे रेटिंग बनाते हैं, कॉनरेड लाइमर का रेटिंग इधर पे थोड़ा गिरा हुआ दिखा रहे हैं, मार्शल सैविट्जर जो 70 मिनट के बाद गायब ही था उसका 6.8 दिखाते हैं, फुटमॉब में देखते हैं, फुटमॉब में 6.7 is it the highest rated for, yeah I think it is the highest rated, एंड लाइमर को इन्होंने राइटफुली गिराया है क्योंकि लाइमर wasn't, आई डोंट नो, लाइमर सबिट्जर, मार्सेल सबिट्जर playing for Dortmund, Konrad Leimer playing for Bayern Munich, this guy is playing for Augsburg, it's a 32-year-old boy, 32-year boy, Marco Arnautovic, 37-year-old, the oldest striker for Austria this World Cup. Minutes played, I mean, I have used this guy numerous times in FIFA, तो फिर yeah, goodbye to the game. Goodbye to the game. Mikel Merino, Ferran Torres. Mikel Merino had a decent game जहाँ पे वो दिख ही नहीं रहा था. Yeah, like why would he have? ठीक है, उसके टचेस भी नहीं रहते. 19 टचेस है, ऑपोजिशन बॉक्स में एक टच है, पासेस एंड फाउल्स, तो फिर उसका गेम उतना अच्छे से दिखा नहीं. फेरन टोरेस like would obviously miss a few, but I think he had far more touches than Mikel Merino. Mikel Merino का उतना no, Mikel Merino had more touches, 16 touches. But हाँ, opposition box में फेरन टोरेस का 6 होता. एंड देखो तुम्हारे फेरन टोरेस हो पिच पे एंड वो वर्ल्ड इज लाइक आउट ऑफ द गोल्स ना मारे तो फिर भाई कैसा प्लेयर वो. आई मीन आई एम फीलिंग बिट मच स्लीपी. अभी ये स्ट्रीम एंड करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स गाइस देखो
ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट आई थिंक दिस स्पेन टीम हैज अ सीरियस प्रॉब्लम विद सेट पीसेस। सेट पीसेस अगर तुमने, जस्ट मान लो, if it's not if it's not Croatia, if it's, I mean, I don't know, but if Portugal doesn't qualify, it's good for Spain right now. If Portugal qualifies, उनके पास है Nuno Mendes, who just needs a day to pocket Lamine Yamal. Then on the left flank, I mean on the right flank, you have as Joao Cancelo as a right back, who is just defensively just as open आज जितना दिखा था, and maybe if you introduce someone like a Joao Neves, ठीक है, जो तुम्हारे Joao Neves will, for me Joao Neves will start this game. मुझे पता नहीं अभी लाइनअप्स ओपन हुए हैं कि नहीं इस वाले मैच के लिए। लाइनअप्स क्या, प्रिडिक्टेड लाइनअप है, ये प्रिडिक्टेड लाइनअप है, ठीक है। Joao Neves for me starting, Cancelo and Neto. I don't know about Pedro Neto, but Joao Felix is obviously starting. एंड देन रनर अप गया रूबेन डियास। तो मैं एसेंशियली क्या बोल रहा था, इस मैच में डिस्कस कर लेते, मुझे पता नहीं, क्योंकि आई वोंट बी अवेक, मे बी माई आईज आर जस्ट शटिंग डाउन एंड आई डोंट वांट टू हैव अ another espresso because I would be staying awake for a lot of time then. Nuno Mendes will be, just say, just, I'm just imagining a few situation that round of 16 में Portugal faces Spain. तो इनका ये लाइन शट हो गया। दिस इज द अटैकिंग लाइन अगेन, जहां पे देर वुड बी Baena and Kukurea, the way they played, they should be starting in the round of 16 again. So the most important player it would be John Neves, क्योंकि John Neves करेगा ड्रॉप। ये क्या है, ये क्या है, क्रिएट अ स्प्लिट व्यू, स्टे इन द ब्राउजर, Sucic, Sucic and Sucic. आई थिंक आई शट दिस, बट या लेट्स से अभी इसको तो बंद ही कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो चीज है, अभी अगले गेम का डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली। डियोगो कोस्टा ऑब्वियसली स्टार्टिंग एन ए गोल। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, स्पेन, इफ दे somehow just just passes this player, because this player will obviously drop, not this player will drop, this player will play in those spaces, ठीक है, ऐसे स्पेसेस में वो खेलेगा जहां पे एक्चुअली बर्नार्डो सिल्वा के तुम पार्टनरशिप कर सकते हो। इस गेम के लिए पेड्रो नेटो हैज बीन हाईलाइटेड, बट फॉर मी कॉन्सेकाओ शुड स्टार्ट बिकॉज ऑन द राइट विंग आई डिडंट फाइंड द गेम ऑफ, ऑन द लेफ्ट विंग, ऑन द राइट विंग आई डिडंट फाइंड द गेम ऑफ पेड्रो नेटो, ठीक है। कॉन्सेकाओ को स्टार्ट करो, विटिनिया ड्रॉप्स इन एज द थर्ड बैक, मेंडेस goes in for the forward runs, Joao Felix dropping in that here, Ronaldo obviously not moving because ठीक है, he's a 41-year-old, he won't be moving, ठीक है, you won't expect him कि तुम उसको वो करो एंड ये क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना होता है, तो फिर रोनाल्डो को ऐसे फॉल्स फॉल्स नाइन तो नहीं खिला सकते, क्योंकि फॉल्स नाइन में यू नीड टू रन एंड यू नीड टू प्रेस। He's just timing his runs, and maybe you pass to Joao Felix. Maybe you create chances for Bruno Fernandes. Okay, after a few matches, there will be Ronaldo के लिए अगर करना है तो you need to be just as athletic as possible. And I mean, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है obviously. I mean, Ronaldo should create the chances for his teammates. Maybe put a Choto Red Bull like Neves in the set pieces. Exactly the point of which I have been meaning for the time. तो चलो मान लो, because Portugal being a very defensively solid team, इधर पे कैंसिल आउट कर दो एंड तुम विटेनिया एंड रूबेन डियास की पार्टनरशिप को डाउट ना करो, तो दिस वुड बी अ वेरी हार्ड डिफेंस टू बीट फॉर स्पेन, बिकॉज ऑस्ट्रिया की आज वो डिफेंस थोड़ी दिख नहीं रही थी।
because Kevin Danso had been absent a few moments. David Alaba had been present in a few moments, but that position had been clearly exposed. तो फिर ठीक है. If they don't pounce on them chances, because mind you what, Portugal will pounce on those chances. Portugal will thrive on those free kicks. Portugal will try to find those heads in Ruben Diaz and Vitinha, or maybe Joao Neves. Joao Neves being the shortest and heading it. They will try to find the tall players. Ruben Diaz जैसे हो गए, Nuno Mendes जैसे हो गए. These are clearly dangerous on those situations. And स्पेन के लिए एक और प्रॉब्लम हो सकती है अगर इफ यू ओपन अप इफ यू हैव समवन लाइक अ नेटो हु कैन रन इन स्पेन वाले गेम में मैं बोल रहा हूँ हु कैन रन इन कुकुरिया का गेम नहीं दिखेगा कुकुरिया विल बी डिफेंसिवली posted there क्योंकि विटिनिया नेवेस if they don't make those sideways passes and pass it to Neto or Joao Felix तो इधर से तुम्हारा गेम ब्लॉक होगा पेड्रो पोरो वोंट ड्रॉप एक्चुअली तो इधर पे ज्यादा डिफेंसिवली पोजीशंस जो चले आएंगे इट वुड बी मोर ऑफ रॉड्री इधर पे कोकोरिया वोंट pick up the pace from Neto. So this is what I predict. Although it's too soon to say because the first match is between Croatia and Portugal. Okay. Insights. Cristiano Ronaldo is the first player to score six different World Cup. Both the teams have scored in each of the last Portugal-Croatia meetings. Okay. Portugal ranked just 21st expected goals at this World Cup. Okay, yeah, obviously they have been not scoring any goals, neither have been creating chances. Scored five against Uzbekistan but failed to score in the two of the three group games. Yeah, that is true. That is concerning. That is concerning. That is the only thing that have been on Portugal. So other than that, I think I don't won't be able to watch the match because my eyes are just giving up, guys. Just forgive me. Just forgive me. I'm stopping the stream and yeah, so just we'll see you in the next stream. Probably कल का stream जो होने वाला है between कल का stream किसके वाला है? कल का stream is Cabo Verde and Argentina. Cabo Verde and Argentina. Easy bracket? Maybe. Cabo Verde will try to take the game into the extra time. I think extra time में एक winner आएगा. Or for ups, I think Messi won't try to take the onus because उसको पता है कि उसके teammates ना have not been taking the onus for right now. तो अगर goal score करते हैं, Messi would try to create chances for Alvarez, Lautaro Martinez, even maybe Rodrigo De Paul. De Paul scored नहीं कर रहा. De Paul will obviously pass it to Messi. Messi will create those chances for those strikers. But that's that. Apart from that, क्या ही बोलना है? I think this game will start at 4:30. Let's see, guys. Let's see. I mean, let's see. And with that, I will just say that I'm ending the stream. And I mean, that's all. That's all, guys. That's all. Good night. And कल मिलते हैं. पता नहीं ये गेम तो मेरे लिए बहुत ये गेम जो है this will hold place in my heart, but I'll try to watch it. I'll try to watch it if I wake up. At least the second half. Maybe I don't stream it. But that's that. अभी 3 घंटे stream हो चुके हैं. My first stream in the World Cup. And I think, yeah, important matches. See, expect disappointment. शायद पोर्टुगल ना क्वालिफाई करे ना जाए. That's that.